Good morning, everyone. Welcome to the class, guys. I hope all of you are doing amazing. Good morning, Pratap. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Sumit. Good morning, Zahid. Good morning, ma'am. Good morning, guys. Good We're morning, meeting ma'am. after a long time. Good morning, ma'am. Good morning. I really like the wall. Thank you so much. I was Is it? really worried. Yes, Is this your new home, ma'am? this is currently the new place. Yes. So please, can you do a home tour for us? I wish I could, but that is something that is not allowed, so I cannot do it. Good morning, guys. Welcome to the class. We are meeting after a very long time. So if you have any doubts, any questions, especially related to what we have done till now, anything at all, you guys can ask me. We'll be discussing about those things then. Otherwise, we will start with what we were doing. We will continue actually with adjectives. I think we were doing adjectives, right? Because of this background means you look like what to say means you are in the sky or heaven it's elevating you. No, what are you saying? I Natural was really background. no, I was really worried that this green color it won't look very good, but it's like doing fine. It looks really great. Yes, thank you, Chilian. Hopefully this will be the last place. I am done with shifting. It's so hectic. Okay, so we were discussing adjectives, right? So adjectives, ke, I think we did the types of adjectives. We also started comparison of adjectives, but we did not complete it, right? Yeah. Okay. Chaliye, let's continue. If you guys don't have any questions, any doubts, then we will continue. If you have any questions, you can ask me. And all the pro learners, guys, you can join. Tanishka, good morning. You can also Order of unmute and speak. adjectives topic over, ma'am. No. It will come at the very end, I think. Yes. Oh, okay. It is kind of advanced topic, ma'am. There are so many Not rules. very advanced. I would say, like order of adjectives, if you look at order of adjectives, it's not like I remember all the rules all the time and I speak according to those rules. But if you're Yeah. continuously speaking, if you're continuously listening to people speak in English, it automatically kind of creates those rules in your mind without you knowing. So when you're speaking with, let's say, 5 or 6 adjectives, you will automatically know what should come after what. You won't even have to think about it. Okay, so for example, I would always say like it is an old brick house. I won't say it is a brick old house. Okay, so kind of like that. But if you ask me why, I would like think for 2 seconds because old is the quality and then brick is the material out of which it is made of. That is why maybe it comes after that. Yes, ma'am. It'll take time. Okay, like the order of adjectives is at the very end of adjectives. Two more topics I found difficult, not difficult, interesting or extreme adjectives and degrees of comparison. Means why I'm saying degrees of comparison means we know some words means we know what to add, like what suffix or prefix to add after it. But there are some words where we are not where we're not familiar with. We means in that cases actually we get confusion, ma'am. Like we should use more or should we add er after it? Okay. So we have actually done that also, if I'm not wrong. There are certain words that can For be some used in words both we can ways. for some words we can do, ma'am, but there are some advanced vocabulary and all means we get confused. And also extreme adjectives also, ma'am. If we take exhausted means in on Instagram pages I am getting a lot of posts daily. Right? With Tell me. some adjectives we can add very, but with some adjectives we cannot add very. Example is exhausted. No, you can add very. It's not that you can't. You can say I'm very exhausted, but that is like what to say. It's not
incorrect. I won't say it is like absolutely wrong. You cannot use it at all. But it is why incorrect, because exhausted itself means that Yes, I'm ma'am. very tired, right? That is why with exhausted we don't add very. So of course, that is definitely true that you cannot use very with certain adjectives that are very extreme. But like the ER and EST, mostly if there are multiple syllables, like let's say 4 or 5 syllable words, right? Then we are not using ER, EST. We will add more or most. But you see, Karthik, if I take an adjective like clever, okay, and I say cleverer, cleverest, and I said more clever, most clever, you can say that, ma'am, both will do, right? Both of them are correct, but Yes, when to ma'am. use them? Cleverer is used, or cleverer, cleverest is used when you're comparing people, right? But more clever, most clever is used when I'm comparing the qualities of one person. So I would say Karthik is cleverer than me because I'm comparing me and Karthik to human beings. Okay. But I would say Karthik is more clever than he is industrious or than he is hardworking. So I'm comparing your two qualities. That is, one is you being clever, the other one is you being hardworking. So there I will use more or most. Understood, Oh, Karthik? okay, ma'am. So Okay. this is something that you have to understand. I have done this. I don't know if maybe you have missed or something, but we have done this. We will talk about this again. Okay. Even with extreme adjectives also, like where we should add very and where we should not add very means it's really difficult. Okay. Let's see if I can add a little bit segment of extreme adjectives. Then I'll see. In extreme adjectives, there is a concept called intensifiers and downtowners. Downtoners. Intensifiers and downtowners. I have no idea. Downtowners. Yeah. This concept is kind of Intensifiers. advanced concept. Good morning, ma'am. Okay, so words or phrases that reduce the force of another word or phrase. Okay, let's see, Kartik, if we can Okay, ma'am. talk about this. Good Yes, morning, yes. Good morning. Good morning, Manju. Good morning, Abhay. How are you guys doing? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. How are you? How Yes, are you, ma'am? yes, I'm doing fine, Abhay. Thank you. Ma'am, I didn't see last 3 days, ma'am. No, no class, Abhay. I was shifting to a new house, so I did not take any class for the last 3 days. Okay, Okay, that's thank Okay, you, ma'am. I actually Congratulations, ma'am. informed. Thank you so much, Abhay. I actually informed in the very last class that we did. Okay, so Okay, today ma'am. we are Ma'am, starting fresh. Yes, you, you, ma'am, you purchased a house no, or a rental? not yet, Abhay. Just rent. Actually, the place I was staying is in was very congested. It used to get very hot, so we moved to a bigger house and like a little bit more. What to say? Uh, Something that is a little bit more cooler. Ma'am, if you purchase a new home, you should, you must invite all our Hello English students for housewarming Definitely, I would function. honestly, I would love to meet all of you. That would be like an amazing, amazing experience. If it would be possible, hopefully one day, I would definitely love to meet all my students. That would be amazing. Even we want to attend your marriage. Yes, ma'am. Yes, Long, ma'am. long, long Very good, time. ma'am. There is a long, long way to that. I, Okay, let's start. Yes, yes, Abhay, do you ma'am, want to say something? we was miss you, ma'am. You were missing me. We were missing you, right? Abhay, Yes, we is plural. ma'am. Bilkul, bilkul. Yes, yes. I Yes, have missed you guys as well. we will miss you. We were Yes, missing you. yes. Right, right. Chali, I was also missing you guys Ma'am, a lot. ma'am, one sentence, ma'am. जी Yes, बताइए. ma'am. I have one sentence, ma'am. बिल्कुल बिल्कुल बताइए. Ma'am, this is to inform you. This is to inform you. बिल्कुल correct sentence है. This is to inform you that Uh, water will be closed off for 5 days. Okay. So this is simple present, ma'am. बिल्कुल simple It is present. simple present. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए अब है. If I write the sentence, this is to inform you that we won't be there. Okay. If you look at this Yes, ma'am. sentence, इसमें सिर्फ एक ही main Ma'am, verb है. here Is inform is a noun. Yeah, to adjective. inform. To inform is functioning as the Infinitive. infinitive.
इंफिनिटिव, बिल्कुल. इज हमारा वर्ब है सिंपल टेंस में, राइट? Yes, ma'am. सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. Yes, Okay. ma'am. अंडरस्टूड. दिस क्या है अभय, बताइए. Yes. Yes. This दिस इज टू इन्फॉर्म यू. नहीं मैम, प्रोनाउन मैम, प्रोनाउन. प्रोनाउन तो है, बिल्कुल प्रोनाउन तो है. Noun. कौन सा प्रोनाउन है ये, कार्तिक? व्हाट Dummy टाइप ऑफ pronoun. डमी प्रोनाउन? Demonstrative pronoun. एब्सोल्युटली. Demonstrative. डमी. Dummy डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. नहीं, Yes. डेमोन्स्ट्रेटिव Yes. नहीं. अबे कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, डमी है, बस फिलर है. ओके, ऑलराइट. Okay, चलिए, okay. Yes. very good actually. These kind of expressions, if you can learn these kind of expressions, they are really good. Usually notice वगैरह में लिखा जाता है ऐसे expressions. This is to inform you. बहुत formal Yes, expression, ma'am. Yes, yes. right? Very formal expression written in Yes. notices. Okay, चलिए, let's continue then guys Means with मैम हिंदी या सूचित किया जाता है. जी बिल्कुल, ये सूचित किया जाता है, बिल्कुल, absolutely. Okay, so let's continue. Thank you. If you guys have any other questions, most welcome. If you guys have any other questions, any doubts, you can ask me. If not, we will continue with the degrees of comparison in adjective. Okay? Ma'am, Yes, Meera, बताइए. ma'am, I have two doubts, but ma'am, I will ask little bit. Okay, no problem, Meera. पूछ लीजिएगा. All right. Okay, चलिए, let's continue then with degrees of adjectives. As you guys can see, that we have talked about 3 degrees of adjectives, right? 3 degrees होते हैं: positive, comparative and superlative degrees. We have talked about syllables, कि single syllable या double syllable words जो end होते हैं y, er, ow, le, ये इन सब चीजों से जो end होते हैं words, उनको हम usually कैसे comparative और superlative बनाते हैं? er और est लगा के. black, blacker, blackest, fair, fairer, fairest, clever, cleverer, cleverest, right? ऐसे हम बनाते हैं. We also saw that अगर कोई adjective e से खत्म होता है, जैसे कि nice, late, तो उसके बाद सिर्फ r लगाना है, st लगाना है, er नहीं लगाना है आपको. So double er नहीं होगा nicer, nicest double est नहीं होगा, single e होगा. e को हम drop कर देंगे और बस r और est लगा देंगे. Okay, no need of adding the e twice. So this was the second rule that we discussed about, right? Third rule was that अगर y से end हो रहा है adjective, if the adjective is ending with y, like pretty, lazy, then instead of the y we are adding I, then er, right? So prettier is ttIer, prettiest is ttIest. Okay, yes, someone is raising their hand. Yes, Meera, you have a question? No problem, no problem. I thought you had a question. No problem. So lazier भी y की जगह पे IER, LAZIER, LAZIEST. Okay, so ऐसे हमारा बन रहा है. Then we saw that monosyllabic words, जो एक syllable वाले words है, hot, wet, sad, bad, bad नहीं होगा, कुछ और जो भी single syllable words है, जिसके बीच में एक consonant आता है, it has a vowel in the middle, like O, E, and at the end we have a consonant. So a vowel followed by a consonant. Okay, O के बाद T आ रहा है, O हमारा vowel है, उसके बाद T हमारा consonant है. अगर ऐसा formation है, if we are getting monosyllabic words in this formation, then what happens? The consonant doubles, right? So HOTTER, hotter, HOTTEST, hottest, wetter, 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 WETTEST, wettest. वैसे ही sad का भी होगा SADDER, sadder, SADDEST, double. Okay, so I think यहाँ तक हमने किया था, ये रूल हमने किया था, right? Alright, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. गुड मॉर्निंग अनुपम, वेलकम. चलिए, so यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम मूव ऑन करेंगे नए पार्ट्स में. Okay, so as you guys can see here, rule number 5 says that for other double syllable words that do not end with y, er, ow, le, and for adjectives with more than 2 syllables, we use more and most to form comparative degrees. So कुछ ऐसे double syllable words हो सकते हैं, disyllabic words हो सकते हैं, जो y, er, ow, le से खत्म नहीं होते हैं. They do not end with these kind of endings. For them we will not add er और est. इनके साथ हम er और est ऐड नहीं करेंगे.
what will we do? We will simply add more and most to those words to make comparatives and superlatives. So difficult, more difficult, most difficult. Careful, more careful, most careful. Handsome, more handsome, most handsome. This is how we are making these sentences. And for other adjectives that are more than 2 syllables, कुछ ऐसे भी adjectives है जो कि 2 syllables से ज्यादा है. Handsome जैसे कि handsome, इसमें सिर्फ 2 ही syllables है. It is a 2 syllable word, right? Careful, again 2 syllables. Difficult, 3 syllables, right? Difficult में देखिए 3 syllable है. Difficult, so 3 syllables. So इसीलिए इनके साथ more या most लगाया जा रहा है. अगर आप देखेंगे careful और handsome में 2 syllable तो है. They have 2 syllables, but they are not ending with Y or ER or W, OW or LE, nothing like that, right? So that is why we are adding more and most to them. Is this clear, guys? Fifth rule clear है? कोई भी doubt है बताइए. Usually जो थोड़े से बड़े से words होते हैं, उनको हम ER या EST से नहीं लगाते हैं. We don't use ER or EST with those words. We mostly use more or most. Okay? बताइए, is this rule clear? Any doubts? Any questions? All right, chaliye. So I can't see any questions, any doubts. We will move on to some questions before we look at the sixth rule. Sixth rule थोड़ा सा important है. कार्तिक जिस बारे में बता रहे थे that like कभी clever हो सकता है, कभी cleverer हो सकता है, कभी more clever हो सकता है. So कैसे पता करना है कि कौन सा सही है? Which one is correct, right? Whether it is cleverer or clever, more clever. We will look at that once. Let me just open some. Okay, we don't have really any questions with that. Alright, chaliye, let's continue then. So this was the fourth rule, right? यहाँ तक तो काफी simple है, I know. Sixth rule, please look at this very, very carefully because this will tell you exactly when to use what. Okay. So ये जो 3 examples यहाँ पे दिए हुए हैं, these are very common examples, but these are not the only examples in the English language that can be made into 2 types of comparatives, that can be made into 2 types of superlatives. No, there are more such examples, but I have not given it here. Okay. So क्या बोला जा रहा है? There are few adjectives that can use both ER and EST and more and most to form their comparative and superlative forms. The distinction between this is that ER and EST are used when we are comparing the noun to another noun, and more and most is used when we are comparing characteristics within the noun. So ये क्या बोला जा रहा है, अच्छे से समझिए. So कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे adjectives है जिनके 2 forms हो सकते हैं. Cleverer, more cleverer हो सकता है, या फिर cleverest, most cleverest हो सकता है. फिर से quiet का quieter, more quiet हो सकता है. Quietest या most quiet भी हो सकता है. Braver, more brave हो सकता है, या फिर bravest या most brave भी हो सकता है. So both are correct, but they have different uses. इनका जो काम है, use है, ये अलग अलग है. What is the difference in use? अगर मैं cleverer हूँ, if I am taking cleverer, when will I take cleverer? When I am comparing 2 nouns, 2 people. जब मैं 2 लोगों को compare कर रही हूँ या 2 nouns को compare कर रही हूँ, तब मैं cleverer का इस्तेमाल करूंगी. He is cleverer than her. 2 nouns है, he और her, 2 nouns है. इन 2 लोगों को मैं compare कर रही हूँ. I'm comparing these 2 people. That's why I'm using ER. Okay, I would say he is the cleverest person in his class. He is the cleverest person in his class. अगर मुझे superlative बनाना है, I'll say he is the cleverest person in his class. Okay, but let's say I want to say but if I want to say more clever or most clever, when am I using more clever or most clever? When I'm comparing
two qualities within the same person. दो क्वालिटी है एक ही इंसान में है, मैं उन दोनों चीजों को कंपेयर कर रही हूँ, तब मैं मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करूंगी. ओके, देन आई एम यूजिंग मोर और मोस्ट. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से he is more clever than studious. He is more clever than studious. मतलब वो studious होने से ज्यादा बुद्धिमान है, वो studious होने से ज्यादा clever है. So ये जो studious कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो clever कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों एक ही इंसान में है. These two characteristics are within the same person, right? And I'm just comparing these characteristics. I'm not comparing two people. In that case, I will use more and most. I'll say he is more clever than studious. I can say he has the most clever okay, he is the most hoga, sorry. He is the most clever when he is cheating. He is the most clever when he is cheating. So इसमें क्या बोला जा रहा है कि वो सबसे तेज तब होता है जब वो चीट करता है. So कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि चीटिंग करने के लिए सब लाइक अपना जी जान लड़ा देते हैं बट पढ़ाई नहीं करते हैं, राइट? They have a lot of like intelligence, they have a lot of smartness in them, but they don't use it to study. That is what I'm trying to say here. In this case, am I comparing the kid to anyone else? अगर मैं बोलूं ये बच्चा हमेशा सिर्फ चीटिंग करने के लिए ही अपना पूरा दिमाग लगाता है, तो मैं उसे किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ. I am comparing his own characteristics with himself. I am saying कि वो जब पढ़ाई करता है तो वो क्लेवर नहीं होता है, वो अपना जी जान नहीं लगाता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है. बट जब वो चीट करता है तो वही बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है. So the same kid in two situations, right? In that case, I will use most clever, but I won't say cleverest. He is the cleverest when he is cheating. No, I'll say he is the most clever when he is cheating. Understood, guys? So when characteristics are being compared within the same person, we are using more clever, most clever. But when the person is being compared to other people, other human beings, then we are using cleverer or cleverest. Is this difference clear? Bataiye, guys. Any questions from this difference? Any doubts? Yes. Chaliye, no doubts, no questions. Very nice. We will move on to quiet and breathe. Same cheese hai. Bilkul same cheese hai. This is the most quiet place. This is the quietest place. Place in my, sorry. This is the quietest place in my house. Okay. So क्या हो रहा है देखिए, quiet और quietest अगर हम बोले, sorry, so सबसे पहले quieter का बनाते हैं तो आप समझ जाएंगे better. He is quieter than his sister, and he is more quiet. ओके, देखिए अब क्या हो रहा है, जब मैं क्वाइटर बोल रही हूँ, व्हेन आई एम सेइंग क्वाइटर, आई एम कंपेयरिंग टू पीपल. whom am I comparing? He and his sister. उन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ये अपने बहन से थोड़ा ज्यादा शांत है, राइट? सो आई एम कंपेयरिंग टू पीपल. But when I say more quiet, I am not comparing him with anyone. I am comparing him with himself. उसी के साथ में कंपेयर कर रही हूँ. I am saying he is more quiet in the school. मतलब वो जब स्कूल जाता है तो ज्यादा शांत होता है, घर पर आने से थोड़ा कम शांत हो जाता है. उसी के साथ में उसी का कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं किसी और इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ. ओके, आई कैन ऑल्सो कंपेयर हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. ही इज मोर क्वाइट देन शाई. बच्चा शांत है पर वो मतलब शाई को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ही इज नॉट
shy Sharmila. is शर्मिला, right? बच्चा, thank you. So वो शांत है, शर्मिला नहीं है, right? So I'm comparing both of these characteristics, that is Shant and Sharmila, or shy and quiet. But these two characteristics are within the same kid, right? I'm not comparing him to anyone else. In this case, I can again use more quiet, not quieter. Okay. Similarly, most quiet देखिए, this is the most quiet place. This is the most quiet place. Singular, एक place के बारे में मैं बात कर रही हूँ, मैं उसे किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ. Okay, मैं उसे किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ. But I can say, or I can say, this is the most quiet place at night. Okay. और भी क्लियर हो गया, दिस इज द मोस्ट क्वाइट प्लेस एट नाइट. सो ये रात को सबसे शांत जगह होती है. मैं उसी प्लेस को उसी प्लेस से कंपेयर कर रही हूँ, किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर रही हूँ. बट व्हेन आई से दिस इज द क्वाइटेस्ट प्लेस इन माय हाउस, आई एम कंपेयरिंग इट टू द अदर प्लेसेस इन माय हाउस. वो जो जगह है, अगर मैं बोलूँ ये मेरे घर का सबसे शांत कोना है, सबसे शांत जगह है, सो मैं उस जगह को बाहर के बाकी जो भी जगह है उससे कंपेयर कर रही हूँ, इसीलिए क्वाइटेस्ट. Okay, so this is the difference between using ER and EST and more and most. I hope the difference is clear. कोई भी doubts है, you can ask me, guys. Brave or brave, more brave and bravest and most brave का भी same फंडा है. So she is braver than other girls. She was more brave than afraid. Okay. Ma'am. Again, yes, Manju. Yes, ma'am. Please explain. Please repeat about similar person. That this child is quite. जी मंजू बताइए, आप हिंदी में बताइए, नो प्रॉब्लम. Yes, ma'am. ये बच्चा शांत है. शांत है. Yes. ये सेंटेंस का आपको मीनिंग चाहिए मंजू? डू यू वांट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? No, just explain, please, ma'am. अच्छा, एक्सप्लेन. अभी स्कूल से ज्यादा घर शांत रहता है या घर से ज्यादा स्कूल में शांत है? राइट. ओके, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. देखिए मंजू, जब बोल रही हूँ ही इज क्वाइटर देन हिज सिस्टर, राइट? मैं दो लोगों को कंपेयर कर रही हूँ. किसको? एक है ही और एक सिस्टर है. ये दो अलग अलग लोग हैं, राइट? दीज आर टू डिफरेंट पीपल. इसीलिए मैं क्वाइटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ER का. ओके. बट अगर मैं बोलना चाहूँ ही इज मोर क्वाइट इन द स्कूल, ही इज मोर क्वाइट इन द स्कूल, राइट? सो मैं ही को किससे कंपेयर कर रही हूँ यहाँ पे? उसी से कंपेयर कर रही हूँ. मैं अगर बोलूँ ये बच्चा स्कूल में ज्यादा शांत होता है, इसका मतलब क्या है कि ये बच्चा घर में कम शांत होता है, राइट? सो मैं उसी को दो सिचुएशन में कंपेयर कर रही हूँ. एक जब वो स्कूल में रहता है, दूसरा जब वो घर पर रहता है, राइट? सो मैं उस बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर रही हूँ, खुद ही के साथ कंपेयर कर रही हूँ. मैं उस बच्चे को उसी के साथ कंपेयर कर रही हूँ. उसी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, या उसको दो सिचुएशन में रख देंगे तो वो कैसे डिफरेंट बिहेव करेगा, उस चीज को मैं कंपेयर कर रही हूँ, राइट? इसीलिए मैं मोर क्वाइट का इस्तेमाल कर रही हूँ. सिमिलरली यू कैन सी ही इज मोर क्वाइट देन शाई. ही इज मोर क्वाइट देन शाई. अगेन क्या हो रहा है, देखें, ही को मैं किसी और से कंपेयर नहीं कर रही हूँ. मैं उसी बच्चे के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है शर्मीलापन, दूसरा है शांत स्वभाव, राइट? मैं उसके ही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर रही हूँ. मैं बोल रही हूँ वो थोड़ा शांत है पर उतना शर्मीला नहीं है, वो शांत ज्यादा है शर्मीला होने से. सो मैं उसे किसी और से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, उसी के अंदर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर रही हूँ. इसीलिए मैं मोर क्वाइट का इस्तेमाल कर रही हूँ. अंडरस्टूड मंजू? Yes, ma'am. So this is a rule that we apply to more or less all the adjectives. Okay, ये rule apply होता है. Right, ma'am. Alright, देखिए again, she is braver than other girls. I am comparing her to other girls. I am comparing her to other girls. So I am using braver, but I am saying she was more brave than afraid. I am comparing two qualities on her, that is braveness and afraid, right? Fear basically. And I'm comparing these two qualities within the same person. So I'm using more brave. Okay, superlative का एक बना लेते हैं. I think you guys will understand them better. I can say, yes, yes, Tarla. Quiet and quiet spelling is different, so meaning also different, na ma'am? Sorry, this is wrong. Quiet. नहीं, सही तो है, spelling तो सही है. QUIET. And other side in this column. कौन सा? Quiet. Quiet. सब जगह तो quiet ही है, QUIT ही है.
He is more quiet in the school. ओ क्वाइट हो गया ये सब आई ओके क्वाइट होता है What is the second meaning, ma'am? दूसरा का मतलब ही इज क्वाइट अपसेट ओके दोनों क्वाइट क्वाइट होता है एक का स्पेलिंग होता है QUIET दूसरा का होता है QUITE ओके क्वाइट सो ये जो क्वाइट है QUIT इसका मतलब होता है ही इज क्वाइट अपसेट मतलब काफी अपसेट है काफी जो होता है वो क्वाइट होता है ओके ज्यादा. काफी नॉट रियली ज्यादा यस यू कैन से थोड़ा ज्यादा ओके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन काफी होगा ऑलराइट तरला आई एम क्वाइट रिच इफ आई से आई एम क्वाइट रिच मैं काफी अमीर हूँ आई वोंट से मैं ज्यादा अमीर हूँ आई वुड से मैं काफी अमीर हूँ अंडरस्टूड तरला Okay, okay, ma'am. सो ET क्वाइट ये क्वाइट ओके थोड़ा सा हल्का सा एक डिफरेंस आता है इसमें ई का साउंड टी से पहले आता है क्वाइट क्वाइट ऐसे होता है ये फर्स्ट वाला क्वाइट ओके क्वाइट Quiet. और जो दूसरा वाला है इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं क्वाइट क्वाइट ओके Quiet. थोड़ा सा हल्का एक डिफरेंस है स्पेलिंग वो प्रोनाउंसिएशन का अदरवाइज स्पेलिंग का डिफरेंस आता है एक में टी पहले आता है दूसरे वाले में टी बाद में आता है Yeah, ma'am. ऑलराइट Thank you. मोस्ट वेलकम चलिए सो इफ आई लुक एट दिस मोस्ट ब्रेव सॉरी ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट ब्रेव कैसे सेंटेंस बनेगा शी इज द ब्रेवेस्ट अमंग हर सिस्टर्स ओके वो अपने बहनों में सबसे ज्यादा ब्रेव है सो आई एम यूजिंग ब्रेवेस्ट बिकॉज आई एम कंपेयरिंग हर टू हर सिस्टर्स हियर राइट बट इफ आई वांट टू यूज मोस्ट ब्रेव आई से शी इज द मोस्ट ब्रेव when faced with challenges. Okay. She is the most brave when faced with challenges. मतलब वो सबसे ज्यादा ब्रेव तब होती है जब उसके सामने कोई कठिनाई या चैलेंज आ जाता है ओके सो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है आई होप दिस इज क्लियर गाइस कोई डाउट्स है कोई क्वेश्चंस है बताइए No, ma'am. Thank you. चलिए मोस्ट वेलकम आई होप दीज रूल्स आर क्लियर ER और EST कैसे लगाना है Yes, ma'am. okay let me just try and find a few exercises that you can do uh, चलिए let's start I have a few questions here I'll give more okay don't worry everyone will get a chance I will do a few bunch of questions so let's start with Abhay then Abhay would you like to begin yes ma'am जी बताइए my sister thinks she is dash intelligent than me but I don't agree इंटेलिजेंट का आपको कंपेरिजन बनाना है और जैसे भी बनेगा yes लगा ma'am के ma'am my sister thinks she is more intelligent than me but I don't agree absolutely correct my sister thinks she is more intelligent than me but I don't agree intelligent चार syllables है right quite a long word so we will not use intelligenter we will say more intelligent and we are comparing two people here right very good thank you so much Abhay thank you very nice चलिए after Abhay Alpna would you like to say answer Avatar is probably dash film I have seen okay ये थोड़ा सा difficult हो सकता है क्योंकि हमने irregulars नहीं किए Alpna just wait okay one second let me just explain the irregular quickly उसके बाद करेंगे so after this we have irregular adjectives okay ये थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका irregular comparison क्या होता है irregular जो वर्ड है ये आप बहुत सुनेंगे इसके बाद when we are doing while we are doing grammar more and more आप बहुत सुनेंगे irregular verbs irregular adjectives irregular so on and so forth right
सो ये इरेग्युलर क्या होता है? इरेग्युलर का मतलब होता है जो रेगुलर से हटकर हो, जो रूल से हटकर हो, एक्सेप्शंस जिनको बोला जा सकता है. ओके, सो दीज आर बेसिकली एक्सेप्शंस टू द रूल्स दैट वी हैव लर्नड टिल नाउ. सो इसके लिए क्या होता है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते वक्त. So these adjectives do not make their comparative and superlative forms using the rules above. Their comparative and superlative forms are different words altogether. इनका जो comparative और superlative form बनता है, जो शब्द, वो बिल्कुल ही अलग होता है, इनसे बिल्कुल अलग होता है, right? जिससे good का बनता है better या best, जिसका कोई मतलब क्या बोले, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, गुड वर्ड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट? बट गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, सुपरलेटिव होता है बेस्ट. So I'll say I am good, I would say he is better than her, and I would say he is the best in his class. Right? तीनों का मतलब गुड होता है. Well हो सकता है गुड का कंपैरेटिव कब हो सकता है? जब हम इसे एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं. This will be used as adverb, not as adjective. If I say he is well, so I would say kind of like he is doing well. Okay? कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली आई वुड से ही इज डूइंग वेल और ही इज फीलिंग वेल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो थोड़ा एडवर्ब की तरह यूज होता है. गुड का कंपैरेटिव वेल भी हो सकता है. बैड एंड इविल का क्या हो सकता है? इल और वर्स और वर्स्ट. सो बैड का यूजुअली बैडर नहीं होता है, इट इज वर्स और वर्स्ट. सो ही इज वर्स देन हिम, राइट? ही इज वर्स देन हिम, वो उससे भी ज्यादा बुरा है. लिटिल इज लेस, लेसर एंड लीस्ट. मच, more, most, ये तो हमें पता है. and many, more, most. so much और many दोनों का comparative more होता है and superlative most होता है, right? but what you have to understand is one, much जो है वो quantity के लिए use होता है, right? we already know that uncountable nouns के साथ much use होता है. I don't like much sugar in my tea, right? but जो countable nouns है उनके साथ many use होता है. I like many sugar cubes in my tea. राइट? सो सिमिलरली मोस्ट का तभी आप इस्तेमाल करेंगे जब आप नंबर या क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हो सुपरलेटिव. मोर का कंपैरेटिव के लिए. नेक्स्ट इज लेट का है लेटर एंड लैटर, लेटेस्ट एंड लास्ट. ओल्ड का है ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट. फार का है फारदर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट. अब ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम थोड़ी देर बात करेंगे. वी विल डू दिस सेपरेटली, हर एक का अलग अलग मीनिंग देख देख कर करेंगे. अभी के लिए आप ये गुड और बैड को अच्छे से समझ लीजिए. गुड का होगा गुड, बेटर, बेस्ट. बैड का होगा वर्स, वर्स्ट. सो बैड, वर्स, वर्स्ट. और वी कैन से इविल, इल, वर्स्ट. ओके, ही इज इल, मोर इल और इल देन हिम. ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं. और ही इज मोर इल, सिंपली ही इज मोर इल. ऑलराइट. मैं जी अभय. इविल मींस बुरा. इविल मींस बुराई या बुरा, बीमार? बुरा, नो नो नो, बीमार नहीं, बुरा. ओके. ये जो इल है अभय, इसका मतलब ये नहीं है कि बीमार. एक होता है आई एम इल, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बीमार हूं. बट मैं बोल सकती हूँ ही इज मोर इल देन गुड. ही इज मोर इल देन गुड. इसका मतलब क्या हो गया अब है? इसका मतलब वो ज्यादा बुरा है अच्छे होने से. तो अच्छे होने से ज्यादा बुरा है. हम बोलते हैं ना कुछ लोगों के बारे में कि इसमें अच्छाई तो है बट इसमें ज्यादा बुराई है, ज्यादा बुरा है ये, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ही इज मोर इल देन गुड फॉर यू. मे बी आई कैन आल्सो से ही इज मोर इल देन गुड फॉर यू. मतलब वो तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा है अच्छा होने से. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स एंड गॉड ब्लेस यू. whoever is sneezing. Weather थोड़ा खराब है. Please take care of yourselves, guys. Oh, I sorry, hope this ma'am. is no problem. I hope this makes sense, right? So ill को भी हम comparative की तरह use कर सकते हैं, but दो लोगों को compare करने के लिए usually ill का इस्तेमाल नहीं होता है. दो characteristics को या दो situation को compare करने के लिए ill का इस्तेमाल होता है. Okay, so ये थोड़ा सा आप याद रखिए. मोस्टली आपको जो याद रखना है वो है गुड, बेटर, बेस्ट और बैड, वर्स, वर्स्ट. ये आपको याद रखना है. ऑलराइट, चलिए लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चंस. लेट्स सी. चलिए अल्पना, नाउ यू कैन आंसर. बताइए. जी अल्पना, आर यू देयर?
बताइए. Avatar is probably dash film I have ever seen. I can't see screen. Yeah. Why? That's probably. देखिए, is it visible ना? जी, is it visible for everyone else? Yes, ma'am. Avatar Okay. was Okay, thank you, the चलिए. scene. जी बताइए. Avatar is probably dash film I have seen. Bad का आपको कोई फॉर्म लगाना है, कंपैरेटिव हो जाए, सुपरलेटिव हो जाए, जो भी है. Avatar's probably more worst film I have seen. बिल्कुल करेक्ट. वर्स्ट सही है, मोर लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है. वर्स्ट ही सुपरलेटिव है, राइट. बैड का जो सुपरलेटिव है कि सबसे खराब, वो वर्स्ट है, राइट. और हमेशा सुपरलेटिव से पहले कौन सा वर्ड लगता है? द, राइट. सुपरलेटिव से पहले हमेशा द लगेगा, एकदम याद रखना है इस चीज को. सो अवतार इज प्रोबेबली द वर्स्ट फिल्म आई हैव सीन, राइट. वेरी गुड अल्पना. थैंक यू सो मच. चलिए, आफ्टर अल्पना, अमित, वुड यू लाइक टू ट्राई? Yes, ma'am. बताइए, Yes. व्हाट इज डैश? डैश मंथ ऑफ द ईयर इन इंग्लैंड. Winter. What is the winter month? सबसे ज्यादा वेट, ये नहीं, कंपेयर नहीं किया जा रहा है. सबसे ज्यादा वेट क्या है वो पूछा जा रहा है. Wettest, ma'am. Wettest, ma'am. द वेटेस्ट, राइट. द लगेगा The क्योंकि wettest, सुपरलेटिव the है. wettest. द वेटेस्ट. वेटेस्ट का स्पेलिंग क्या होगा बताइए हमें. WETT, ma'am. बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. WETTEST. डबल टी Yes. लग रहा है क्योंकि ई टी है, राइट. मोनोसिलेबिक है, एक सिलेबल का वर्ड है, और बीच में हमारा वावल आ रहा है ई, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा. वेरी गुड अमित. थैंक यू Thank you. सो मच. चलिए, आफ्टर अमित, अनुपम, वुड यू लाइक टू ट्राई? Yes, ma'am. जी अनुपम, बताइए. डू यू थिंक हैरी पॉटर फिल्म्स आर डैश देन द बुक्स? Do you think the Harry Potter films are better than the books? बिल्कुल करेक्ट, राइट. बेटर देन द बुक्स. हैरी पॉटर फिल्म्स को कंपेयर किया जा रहा है बुक से. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड क्या है? बेटर. बिल्कुल सही. वेरी गुड अनुपम. थैंक यू. आफ्टर अनुपम, मंजू, वुड यू लाइक टू ट्राई? Yes, ma'am. बताइए. हु इज डैश पर्सन इन आवर कंट्री, इन योर कंट्री, सॉरी. Who is the most powerful person in your country? एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत अच्छे मंजू. वेरी गुड. सो Thank you. पावरफुल. 3 सिलेबल्स आ गए. ऑब्वियसली मोस्ट लगेगा, राइट. कंपैरेटिव नहीं है, सुपरलेटिव है, क्योंकि हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे. हम पूछ रहे सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है, और सुपरलेटिव है, मोस्ट लग रहा है, सो ऑब्वियसली द लगेगा. द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन योर कंट्री. वेरी गुड मंजू. थैंक यू. आफ्टर मंजू, मीरा, बताइए. आई थिंक मेन इन ब्लैक was Ma'am, dash than Men in Black 3. Ma'am, comparative degree, ma'am. बिल्कुल. क्या होगा बताइए मीरा? Funnier, ma'am. फनियर. स्पेलिंग क्या होगा मीरा फनियर का? FUNN. वाई बन जाता है ER, ma'am. IER. IER. वेरी गुड. जब वाई होता है किसी वर्ड के एंड में और उसको हम ER या EST बनाएंगे, सो वाई Y हमेशा हटके. आई बन जाता है, राइट. Yes, द वाई चेंजेस इनटू आई. सो फनियर. वेरी गुड मीरा. Thank you, थैंक यू सो मैम मच. मैम यहाँ पर मोर नहीं लगेगा फर से पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं. फनी. 2 वर्ड्स है, 2 सिलेबल्स है, सॉरी 2 वर्ड्स नहीं है, 2 सिलेबल्स है. फनी 2 सिलेबल डाइसिलेबिक वर्ड. ओके अल्पना. मैम if there is comparatively like then is there then we I was more funnier than in नो in black. नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं. देखिए अनुपम, आपको when we did the classes about in like how to form comparatives, वो क्लासेस तो अपने सारे किए हैं, राइट अल्पना? Yes मैम. राइट. सो अच्छे से समझिए. अब देखिए, he is funnier
than me. He is more funnier than me. He is more handsome than me. Okay. 3 sentences मैंने लिखे हैं यहाँ पे देखिए. He is funnier than me, he is more funnier than me, and he is more handsome than me. यहाँ पर आप देखिए handsome का comparative बनाया जा रहा है. More handsome, right? Correct, अल्पना? Yes, ma'am. जी, handsome में कितने syllables है? 2 syllables है. Yes, ma'am. Handsome, handsome. But ये जो 2 syllables है, इसका एंड जो है ME से एंड हो रहा है, इसीलिए इसका हैंडसमर नहीं बना सकते. इसका कंपैरेटिव कैसे बनता है? मोर लगा के बनता है. मोर हैंडसम. ओके, ये इसका कंपैरेटिव है. बट फनी जो है Okay, ma'am. Now I got it. अंडरस्टूड. सो फनी का फनियर बन रहा है कंपैरेटिव. सो अगर Yeah, ऑलरेडी ma'am. कंपैरेटिव Yes, बन रहा है ER लगाकर, फिर मोर क्यों लगाएंगे? फिर तो मोर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है. अगर आप कभी भी मोर फनियर, मोस्ट Right, ma'am. फनीएस्ट Right, ma'am. ऐसे बोल Thank देंगे, you, ma'am. राइट, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डबल कंपैरेटिव. वो नहीं लगता है इंग्लिश में. ओके, यू कैन नॉट मेक इट डबल. एक ही होगा. अरे वेरी Yes, गुड. ma'am. ओके, Thank you, ma'am. चलिए, मोस्ट वेलकम अल्पना. चलिए, आफ्टर अल्पना, आफ्टर सॉरी मीरा, वी हैव प्रताप. प्रताप, वुड यू लाइक टू ट्राई? Yes, ma'am. बताइए. Oldest. ओल्डेस्ट नहीं, सैंड्रा Old- बुलक older. और Older, बीच की column को second वाली older बिल्कुल बिल्कुल और older, oldest. बिल्कुल ओल्डर होगा यहाँ पे. ओके प्रताप, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओल्डर होगा यहाँ पे. क्यों? एंजेलिना जोली एक एक्ट्रेस का नाम है, सैंड्रा बुलक और एक एक्ट्रेस का नाम है, दोनों एक्ट्रेस है. उन दोनों को Okay, ma'am. कंपेयर Okay, किया ma'am. जा रहा है. ओके, कंपैरेटिवली, इसलिए ओल्डर. वेरी गुड, वेरी गुड. So is Angelina Jolie older than Sandra Bullock? Very good. Thank you so much, Pratap. After Pratap, we have Shagufta. Shagufta, would you like to Thank you, try? ma'am. Yes. Shagufta, बताइए. Would you like to try? Yes, ma'am. John is dash person that I know. सबसे अच्छा इंसान. John is oldest. नहीं, nice का आपको बनाना है. अच्छा, nice. Nice. Superlative, nicest. Okay. Nicest. और सुपरलेटिव से Person. पहले क्या लगाते हैं शगुफ्ता? सुपरलेटिव डिग्री लगाने से पहले कौन सा वर्ड लगाते हैं? More, ma'am. More. नहीं जी, नहीं. सुपरलेटिव से पहले हमेशा आर्टिकल लगता है, द. Oh, Right? yes, ma'am. द नाइसेस्ट. ई ऑलरेडी Nicest. है, इसीलिए सिर्फ एसटी लगाएंगे. ई ऑलरेडी Yes, है ma'am. नाइस के एंड में, तो सिर्फ Yes, एसटी ma'am. लगाएंगे. जॉन इज द नाइसेस्ट पर्सन दैट आई नो. वेरी गुड, वेरी गुड. गुड वर्क शगुफ्ता, थैंक यू. चलिए, Ma'am. आफ्टर शगुफ्ता, यस मीरा, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, ma'am. Sometimes we speak in conversation, he is the nice person. He is Only the nice nice? is- No. No. You No, cannot say no. he is the nice person. आपको बोलना होगा he is the nicest person. वो सबसे अच्छा. देखिए, अगर मैं बोलूं Ma'am, can He we is- say he is the best person that I बिल्कुल know? बिल्कुल, Yes, he is we the can best say, person but I know. not- बेस्ट क्या है? बेस्ट तो गुड का ही सुपरलेटिव Good है. का better तो best बेस्ट बोल है. सकते हैं, राइट? अगर मैं बोलूं he is a nice person, मतलब वो एक अच्छा इंसान है. अगर मैं बोलूं he is nicer than his brother, इसका मतलब वो अपने भाई से ज्यादा अच्छा है. अगर मैं बोलूं he is the nicest person I know, मतलब वो सबसे अच्छा इंसान है, मतलब मेरे जाने पहचानों में सबसे अच्छा इंसान वही है. ओके, और Ma'am, सुपरलेटिव में हमेशा द लगेगा. जी मीरा. Ma'am, then if we use the nice, then it means wrong. बिल्कुल बिल्कुल जी, आप नहीं बोल सकते. ओके, Okay. मतलब ऐसा तो नहीं कि कभी भी यूज नहीं होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, यूज कर सकते हैं, बट आर्टिकल के हिसाब से यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सोचिए, मैंने आपको एक अच्छे इंसान के बारे में बोला कि मेरा पता है एक बहुत अच्छा इंसान है मेरे ऑफिस में, आई हैव अ वेरी नाइस पर्सन दैट आई वांट यू टू मीट. ओके, फिर हम ऑफिस गए और ऑफिस में मैं उस इंसान को देखी, तो मैं बोलूंगी मीरा आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द नाइस पर्सन, दिस इज द नाइस पर्सन. ओके, यही वो अच्छा इंसान है.
बट यहाँ पर जो द है वो का काम कर रहा है. Article, as a article. ओके यहाँ पे भी यहाँ पर वो मतलब ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि मैं जिस बारे में बात कर रही थी, जिस नाइस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ. बट जब द नाइसेस्ट बोलती हूँ वो सुपरलेटिव दिखाने के लिए काम आता है कि सबसे अच्छा, इसीलिए मैं द का इस्तेमाल कर रही हूँ. अंडरस्टूड मीरा? Thank you, ma'am. चलिए, मोस्ट वेलकम. लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस देन गाइस. Ma'am, I have doubt now. I can ask them. I can see, ma'am. जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए मीरा. थोड़ा क्वेश्चन कर ले उसके बाद. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच. Okay, ma'am. Okay. चलिए, आफ्टर शगुफ्ता, शशिकांत, वुड यू लाइक टू आंसर? शशिकांत, ओके. सुमित, वुड यू लाइक टू आंसर? बताइए. ओके, देन तनिष्का, वुड यू लाइक टू आंसर? Yes, ma'am. जी तनिष्का, बताइए. माय ब्रदर हैज अ डैश रूम देन मी. Ma'am, tidier. टाइडियर, टाइडियर. ओके, Tidier. स्पेलिंग बताइए तनिष्का. Tidier. बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. वाई बन जाता है आई और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टाइडियर. 3 सिलेबल्स है. ओके, Okay, ma'am. वेरी गुड तनिष्का, थैंक यू सो मच. चलिए, सुमित, वुड यू लाइक टू आंसर द नेक्स्ट वन? Yes, ma'am. बताइए. Australia- ऑस्ट्रेलिया इज Australia is bigger than England. करेक्ट. स्पेलिंग BIGGER. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. थैंक यू सो मच सुमित. BIGG क्यों? मोनोसिलेबिक है, एक सिलेबल है, राइट. बिग, Yes, ma'am. और उसमें आई और जी, वावल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एट द एंड. वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुमित. चलिए, Thank you. आफ्टर सुमित वी हैव तरला. तरला, वुड यू लाइक टू आंसर? I am better now than yesterday. एब्सोल्युटली करेक्ट. आई एम बेटर नाउ देन यस्टरडे. और बेटर क्या है? गुड का कंपैरेटिव. वेरी गुड, थैंक यू सो मच तरला. आफ्टर तरला वी हैव विशाखा. विशाखा, वुड यू लाइक टू आंसर? She's got a little. यहाँ पे एक्चुअली लेस होगा, Less, LESS. less Okay, money he's than got- you. She's got less money than you, but she doesn't care. यहाँ पे less का जो फॉर्मूला है, little less, lesser और lessest, I think no, least, sorry, not lessest. Least. Yeah, Least. ma'am. Least. इसका हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे, इसके बारे में एक अलग सा डिस्कशन होगा, उसका अलग सा एक्सरसाइज करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, गुड. तरला, प्लीज आंसर द नेक्स्ट वन एज वेल. Sorry, not Tarla. Who was answering? Tarla? Vishakha. Vishakha, please answer the next one. He thinks Chinese is Chinese is most difficult language in the world. Most. correct. है? The But most. The The most. Yeah. Very good. Absolutely correct, Vishakha. The most difficult language in the world. Most difficult क्यों? Difficult. 3 syllables है. Difficult. 3 syllables. Obviously most आ जाएगा. और the most क्यों? क्योंकि superlative है, हमेशा the लग जाएगा. Very good, Vishakha. Thank you so much. चलिए. After Vishakha, Zahid, would you like to try? Zahid, okay. Yes, जी? ma'am. Yes, Okay, ma'am. Zahid is there. बताइए Zahid. Valencia played dash than Real Madrid yesterday. Worse Balance- than Oh, sorry, you don't understand Hindi, right? Zahid, can you tell me, like, we are comparing, right? We are comparing Valencia with Real Madrid. So when we are comparing, it should be comparative degree. What is the comparative of bad? Bad, worst. worse, worst. Bad, worse, worst. Okay. Worst. WORSE. This is the comparative degree of bad. Okay. The superlative would be the worst. If I say Valencia is the worst football team. Okay, just saying, no comments. So Valencia is the worst. WORST. That would be the superlative degree. Understood, Zahid? Yes, ma'am. Okay, thank you so much, Zahid. You can try the next one as well. Cats are not dash as dogs. More intelligent as dogs. Okay, yeah, right, you're correct. It should be more intelligent. But when we are using as after it, we always before substitute the more with use as. Okay, as intelligent as dogs. right, absolutely correct. So when we are comparing two things using as, not without as.
with as, then we also substitute the more with as. So it will be cats are not as intelligent as dogs. But you can also say cats are not more intelligent than dogs. So if this would have been than, then we would have used more. But because this is as, we are using as here. Okay, good try. Very nice, Zahid. Thank you so much. All right. After Zahid, then we have Z. Z, would you like to try? Yes, ma'am. बताइए Z. Show me dash restaurant downtown. Show me best restaurant downtown. Best बिल्कुल correct है, but superlative से पहले क्या आएगा Z? The best. The best. Very good. Next one Z. Dash dessert of all. Hottest The dessert. hottest. Spelling That's right, hottest the का hottest. hottest spelling. HOTTEST. Absolutely correct. Monosyllabic word with OT, right? Vowel plus consonant. Very good. Absolutely correct. Last one. Anyone wants to answer? Who is dash talkative person in your family? Who is the most More talkative. The most talkative. The most talkative. Who is the most talkative person in your family? Correct. The most talkative. Talkative. 3 syllables. Talkative. 3 syllables. So, इसलिए we are using most, right? That's why we are using most, not talkative word. And because there is superlative degree, that's why we are using the with it. All right. Ma'am, I hope- Yes. Amit? I am the most talkative person in my family. Is it correct? Absolutely, absolutely. I am the most talkative person in my family. You can say I am more talkative than my brothers or sisters, right? You can Yes. also say that. But guys, remember there are certain very short words as well that cannot be that can also be used with more or most. Okay, not just er or est. The rule that we learn. ये थोड़ा सा याद रखिएगा. Just try and remember this rule a little bit and try to be mindful about this when you're listening to others, when you're reading something in English. Like for example, clever. I have given only 3 here, right? Clever, quiet, and brave. For example, shy. Shy can also be more shy and most shy. Okay, so just remember that I don't think it is shyer and shyest. Shy. Just give me 1 second. Shy, comparative. More shy and most shy. Okay, so this is what I was trying to say, that shyer and shyest is there, but it is better to use more shy and most shy. So if I write shy here, just shy, it can be 2 forms, SHYER or more shy or shyest or most shy. Now, what I want you guys to understand here is that the rules do not apply. The rules that we learned do not apply here. Why? Because you can tell me, ma'am, first of all, this is a monosyllabic word, right? 1 syllable, shy. But it is also ending with Y. Then why shouldn't we write SHIER, right? The spelling should be SHIER. Does not follow the rule. Irregular adjective of comparison. Okay. Sorry, adjective. Irregular adjective creating irregular comparison. Similarly, it can also be used with more shy. Okay, although it has Y, still it is using more shy. Although it is monosyllabic, it is still using more shy. Similarly, shyest, again, not IEST, but YEST. And again, it has more shy. So these are some things that you need to remember. All right, that there are certain anomalies, there are certain exceptions to these rules. The rules that I have given, more or less, I would say 80% of the adjectives fall under that category, but there are many adjectives that do not fall under these categories, right? So what you have to do is be very mindful when you are reading something, when you're listening to others, see what kind of adjectives they are using and try and find out, are they using them correctly? Are these the forms that we have to use? When are we using these forms? Okay, be a little mindful. I think you guys will understand very easily.
Okay, next class we will do little, less, lesser, old, elder, older, eldest, oldest, ये सब करेंगे, and we will look at some exercises as well. All right, yes, Meera, what is your question? बताइए. Yes, ma'am. Ma'am, related to pronouns, ma'am. Okay, बिल्कुल बताइए. Ma'am, my aunt and uncle live in Delhi. Dash जी. often visit dash. One second. My Aunt aunt and and uncle uncle live in Delhi. Dash Delhi. uh, uh, Delhi. Dash Full stop. often. Dash, ma'am, means here we Dash. can use from. Yes. Okay, okay. They often Yes. Visit dash. dash. Yes, ma'am. Okay, you Yes. want me to fill in the blanks. Yes, ma'am. Okay, okay, blank. अच्छा अच्छा. So बताइए यहाँ पे क्या करना है? Pronoun से fill करना है? You have to fill it up with pronouns. Ma'am, they is not here. They is not here. Yes. They ही होगा. Now, ma'am. They ही Yes. होगा. Right? My aunt and uncle live in Delhi. Yes. They often visit Me. us. हमें विजिट करते हैं, राइट? फैमिली जब विजिट करने आते हैं, when someone comes to your family, they don't just come to visit you. आपको विजिट करने नहीं आते हैं, आपके पूरे फैमिली को विजिट करने आते हैं. So we say us. But ma'am, Understood? in answers if we or they, ma'am. We or they. Them. CHM. किसमें है? फर्स्ट वाले ब्लैंक में या सेकंड वाले ब्लैंक में? फर्स्ट वाले में we है मैम एंड सेकंड में them. ओके, अच्छा, वो भी हो सकता है. देखिए मीरा, दोनों सही है. ओके, दोनों बिल्कुल सही है. यहाँ पे we भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप they भी बोल सकते हैं. क्या हो रहा है? जस्ट मीनिंग बदल रहा है. अगर मैं बोलूं my aunt and uncle live in Delhi, they often visit us, इसका मतलब है कि मेरे आंट और अंकल दिल्ली में रहते हैं, वो हमेशा हमें विजिट करते हैं, कभी कभी हमें विजिट करने आते हैं. बट इफ आई से my aunt and uncle live in Delhi, we often visit them, ये they नहीं होगा, सॉरी, ये them होगा. ओके गाइस, जी बिल्कुल them होगा. अगर मैं बोलूं we often visit them, इसका मतलब मेरे आंट और अंकल दिल्ली में रहते हैं, हम उन्हें कभी कभी विजिट करने जाते हैं. जस्ट यही डिफरेंस है. If I am living in hostel, then they come. Then you can say me. Then you will say me. बिल्कुल, बिल्कुल me. Okay, because you are singular. एक इंसान, right? One person, singular. Yes, ma'am. And ma'am, next है that of the witness were present in the court. All of the witness. All Of आएगा ना the- मैम. But ma'am, in answer sheet none लिखा हुआ था मैम. बिल्कुल, वो भी हो सकता है. None of the witness भी हो सकता है. दोनों हो सकता है. Word present बता देती हूँ. Present in court, right? अगर मैं बोलूं, if I say all, if I say none, मतलब क्या हो रहा है? If I say all of the witnesses were present in the court, मतलब सारे के सारे witness present थे. If I say none of the witnesses were present in court, मतलब कोई भी witness present नहीं था. Simple, just meaning में difference है. दोनों सही है. Both of the pronouns are correct. Okay, Meera? Okay, ma'am. Ma'am, I also wrote all, ma'am. All, right. वही थोड़ा common है, इसीलिए आता है दिमाग में कि all होगा, right? Yes, ma'am. And ma'am, जी, last चलिए. one है the book is about NA and it is the best favorite book. This is this one second. This book is about NA. any. NANNE. Okay, Annie name है. अच्छा, Annie and Also, it is dash favorite book. dash favorite का मैं बस fav लिख रही हूँ. Fav book. Okay. So इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है. This book is about Annie. It is my favorite book. It is our favorite book. It is their favorite book. It is her favorite book. It is his favorite book. I also wrote my, ma'am, but in answer it's her. कुछ भी हो सकता है. हाँ, possessive form में कोई भी हो सकता है. My, our, your, their, her, his. इनमें से कोई भी हो सकता है. नाम भी हो सकता है. This is Meera's favorite book. Okay, understood? Meera? Okay, ma'am. चलिए, very nice. Okay, thank you so much, guys. See you at 6 p.m. for our
Hey, good afternoon, everyone. Pro learners, quickly join the Zoom meeting. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all. So guys, today our topic is first real conditional. Okay, so most of or some of you must have done this topic with me earlier as well. So it will be a good revision for you all. So let's quickly start with the first slide. Someone please read. कंडीशनल सेंटेंसेस एक स्थिति और उस स्थिति के हिसाब से उसका परिणाम दर्शाते हैं। यदि स्थिति के सच होने की संभावना हो तो ऐसे सेंटेंस को रियल कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। रियल कंडीशन असल स्थिति। कंडीशन दिखाने के लिए अक्सर वाक्य इफ से शुरू होते हैं। इफ अगर, इफ आई सी पीटर आई विल टेल हिम टू कॉल यू। अगर मैंने पीटर को देखा तो मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हें फोन करे। यहाँ आई की पीटर से भविष्य में मिलने की संभावना है, इसलिए यह रियल कंडीशन असल स्थिति है। यहाँ इफ आई सी पीटर, अगर मैंने पीटर को देखा, कंडीशनल क्लॉज आई विल टेल हिम टू कॉल यू, मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हें फोन करे। मेन क्लॉज। ओके, सो गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस अब आपको हमें पता ही चल गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस हम कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज, ठीक है। इफ क्लॉज में हम इफ वाला सेंटेंस रखते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही हमारे जो टेंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हमारा इफ क्लॉज होता है, और उसके बाद हम यूज करते हैं मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, अगर मैंने पीटर को देखा तो मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हें फोन करे, ठीक है। सो इफ आई सी पीटर, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, इफ यूज कर रहे हैं। इफ के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, इफ आई सी देन ऑब्जेक्ट पीटर, उसके बाद कॉमा, बिकॉज वी आर चेंजिंग द सेंटेंस, वी आर चेंजिंग द फ्रेज। आई विल टेल हिम टू कॉल यू, तो हम क्या कर रहे हैं, आई के साथ विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमेशा आती है, और फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट, राइट। सो वेरी सिंपल, इफ आई सी पीटर आई विल टेल हिम टू कॉल यू। सो एनी क्वेश्चन गाइस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन स्लाइड यही है, इसके बाद आपका डायरेक्ट क्विज स्टार्ट हो रहा है। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन फर्स्ट रियल कंडीशनल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वी कैन डिस्कस। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, फर्स्ट रियल कंडीशनल, हम यहाँ पे रियल ऑलरेडी आ रहे हैं तो रियल चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका इमेजिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास और कंडीशनल्स भी होते हैं जो हम इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं, बट दिस इज रियल कंडीशनल, हम ये रियल चीजों के लिए यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे वो रियल में ही कह रहा है कि अगर मैं पीटर को मुझे दिखेगा तो मैं उससे बोल दूंगा आपको कॉल करने के लिए, राइट। नो क्वेश्चंस?
फिर क्विज में गड़बड़ी मत करिएगा। चलिए, so let's quickly start with the quiz first slide. अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। या दिस इज समथिंग हम अपने पेरेंट्स को या मम्मी को बोलते थे। इफ इट रेन्स आई वोंट गोस टू स्कूल, वोंट गो टू स्कूल। if it rains, yes, choose the right option carefully. Okay, so Alpna, please answer. Alpna, are you sleeping? Amit? Yes, ma'am. If it rains, I won't go to school. Very simple. The second is the right option. If it rains, so rains यहाँ पे क्यों आया? Can someone tell me why it is not if it rain but rains? Third person singular. Exactly. Third person singular, subject verb agreement. Verb हमारा rain verb है. Rain noun भी है बारिश और rain verb भी है बारिश होना. तो यहाँ पे हम इसे as a verb use करें, so we are supposed to put s with it. If it rains, I will not go to school or I won't go to school. Will not का हम abbreviation use करते हैं won't. Pronunciation won't, not want. Want is चाहिए, I want. Okay, this is I won't. So first option में I won't के साथ goes है जो हम नहीं यूज करते. थर्ड ऑप्शन में rain है. फोर्थ ऑप्शन में gone है verb की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट स्लाइड. अगर मैं पढ़ाई खत्म कर लेता हूं तो आज रात पार्टी में जाऊंगा. If I finish study, I will go to the party tonight. If I finish studying, I will go to the party tonight. I goes. If I am finished, choose the right option carefully. Amit, please answer. Yes, ma'am. If I finish studying, I'll go to the party tonight. Yes. So guys, we already have first form of verb which is finish. उसके साथ हम दोबारा first form नहीं use करेंगे. हम यहाँ पे ing use करेंगे. ठीक है? If I finish studying, I will go to the party tonight. So third is the right option. फर्स्ट में दोनों ही फर्स्ट फॉर्म्स है. फिनिश भी फर्स्ट है, स्टडी भी फर्स्ट है. इनकरेक्ट. सेकंड में आई विल के साथ गोज है जो नहीं आएगा. ही शीट के साथ आता है गोज. और फोर्थ ऑप्शन में आई एम फिनिश स्टडिंग है तो नो एम, नो इज, नो आर. ओके, एनी क्वेश्चंस? May I, ma'am? यस पूनम. Ma'am, why we are using ing here? In first sentence, we use first form. It rains. Because Poonam, we cannot use same form of verbs in one sentence together. जब भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और हमें एक और फॉर्म रखनी होती है तो उसमें हम ing यूज करते हैं. ing यूज करते हैं या टू के साथ हम वर्ब यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग to tell you if I finish studying. Okay? Yes. Okay, if I finish studying, अगर मैं पढ़ाई खत्म कर लेता हूँ तो अगर मैं पढ़ाई खत्म कर लेता हूँ तो आज रात में पार्टी में जाऊंगा. मैम here study मैम है, but study can also use like noun.
धार्मिक आपने क्या लिखा है? आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे स्टडिंग जेरेंट की तरह यूज हो रहा है, क्या कहते हैं उसे, वर्ब प्लस आईएनजी, राइट? इफ आई फिनिश्ड माय होमवर्क आई विल मैम, इफ आई फिनिश्ड इज रॉन्ग, मैम कैन वी से इफ आई फिनिशिंग स्टडी? एक मिनट, मैं किसी को ऑलरेडी समझा रही हूँ। त्रिभुवन, it should be if I finish my homework. We are using first form of verb, not second or third form of the verb. Yes, Alpna, बोलिए। I'm asking, can you say if I finish study? No, no. If I finish study is wrong. ऐसा नहीं होता। स्टडी हमारा नाउन होता है, जैसे एक रूम को बोलते हैं हम जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, उसे स्टडी रूम बोलते हैं। सो यहाँ पे स्टडी पढ़ना वर्ब है। धार्मिक आप भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसे नाउन क्यों बोल रहे हैं। इस वर्ब पढ़ाई करना, आपसे किसने कह दिया स्टडी नाउन है यहाँ पे इस सेंटेंस में? आई नो वैसे नॉर्मली पढ़ाई भी और पढ़ाई करना भी है, लेकिन यहाँ वो प्रॉपरली बोल रहा है अगर मैं पढ़ाई खत्म कर लेता हूँ, पढ़ाई मतलब पढ़ाई करना खत्म कर लेता हूँ। अब हिंदी में हम पढ़ाई करना नहीं बोल सकते ना, अगर मैं पढ़ाई करना खत्म कर लेता हूँ इसका मतलब क्या होगा कि हमेशा के लिए खत्म कर दी पढ़ाई। ठीक है, सो डू नॉट गेट सो मच कंफ्यूज्ड। यहाँ पे हम फिनिश के साथ जेरेंड यूज कर रहे हैं, विच इज करेक्ट। Next slide. So, ma'am, we can't say studying is a activity like reading, swimming, like that. We can say, ऐसे भी हो सकता है, studying हो सकता है, activity की तरह हो सकता है। If I finish studying, if I finish cycling, हाँ बिल्कुल हो सकता है विशाखा, very good point. Okay. So यहाँ पे धार्मिक is saying study is already a noun. तो study is not a noun. We can say studying is an activity. So it's a noun. It can be a noun. तो यहाँ पे studying अगर हम activity भी बोल रहे हैं तो वो gerund ही तो हुआ. It is a gerund. Yes, it is. Gerunds are nouns. Exactly. धार्मिक कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन मैं बताती हूँ आपको कहाँ हो रही है। आप कह रहे हैं नाउन है, मैं भी कह रही हूँ नाउन है, लेकिन आप कह रहे हैं स्टडी नाउन है और मैं कह रही हूँ स्टडिंग नाउन है, तभी मैंने इसको जेरेंड बोला, GEREND, जेरेंड। जेरेंड का मतलब ही होता है वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल्स टू नाउन। ठीक है, जो वर्ब में आईएनजी रखते हैं उन्हें हम जेरेंड बोलते हैं और वो नाउन्स होते हैं, दे आर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ओके, तो इसको समझिए, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, समवन प्लीज रीड। If you are in a hurry, yeah, go on. okay. If you are in a hurry, I will call a taxi. अगर आप जल्दी में हो तो मैं टैक्सी बुला लूंगा। यदि if से शुरू हुए वाक्यों के वर्तमान में सच होने की संभावना हो तो भी फर्स्ट रियल कंडीशनल का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में यू के वर्तमान में विलंबित होने की या जल्दी में होने की संभावना है। Yes. Right. So guys, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं, we are learning about if you are in a hurry। अब यहाँ पे हम जो है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म बिल्कुल यूज कर रहे हैं, हमारे पास वर्ब नहीं है, ठीक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से काम चला रहे हैं। और हरी क्या है? हरी तई वर्ब ही तो है हरी। इफ यू आर इन अ हरी, अगर तुम जल्दी में हो तो जल्दी, हरी। आई विल कॉल अ टैक्सी। तो यहाँ पे गाइज हम इफ से शुरू हुए वाक्य को वर्तमान में सच होने की संभावना है, तो इसलिए हम फर्स्ट रियल कंडीशनल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेरी इजी। धार्मिक, तुम्हारा ना मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है और मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बता रही हूँ। तो कैन आई
ही इज ट्राइंग टू से यहाँ स्टडी नाउन की तरह यूज हो रहा है भाई, नाउन की तरह, जेरेंट की तरह यूज हो रहा है। जेरेंट भी तो नाउन है, मैंने नीचे देखिए डेफिनेशन भी लिखी है। जेरेंट इज अ नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी फॉर्म, फॉर एग्जांपल प्लेइंग, डांसिंग, ईटिंग, स्टडिंग। और स्टडी, यस आई एम गोइंग टू यूके फॉर स्टडी, फॉर स्टडी बिल्कुल ठीक है, टू स्टडी हो सकता है। लीव इट, यू लीव इट। Can I add one point, ma'am, Yes, to that start sentence? it. No problem. Actually, we can use gerunds in so many ways. In the previous sentence, it is used as a direct object of a sentence. So Yes. if I finish what? If I finish what? In the place of what, we can put some noun, which is a gerund. Here it is studying. So their studying is the direct object of the verb finish. That's why we can say it is a noun. Okay, All the Dharmik, your direct question objects. is why study is incorrect? Because study हम अकेले नहीं लिखते. We always put a preposition with a study. For example, I am going abroad to study, not I am going abroad study. इसको समझिए. I am going to my friend's house for studying होगा वैसे, but to study it's an वो कौन से थे? Imperative क्या था? मैं terms बहुत जल्दी भूल जाती हूँ. It's that. अब समझ में आया या अब भी समझ में नहीं आ रहा आपको? अल्पना ऊपर पढ़िए मेरा आंसर. व्हाट इज अ जेरेंड? मैंने लिखा है ऊपर. सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते रहते हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे स्टडी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्टडी टू के साथ यूज होता है. आई वॉन्ट टू स्टडी, नॉट आई वॉन्ट स्टडी, इवन इफ यू आर यूजिंग इट एज अ नाउन. नेक्स्ट स्लाइड. अगर आप भूखे हो तो मैं आपके लिए खाना बना दूंगा या दूंगी. If you are hungry, I am cook for you. I will. If you will hungry, if you are hungry, I will cooking for you. Anupam, please answer. If you are hungry, I will cook for you. Very simple. If you are hungry, अगर आप भूखे हैं, तो गाइस यहाँ पे hungry क्या है? Adjective है, ठीक है? तो हम उसके साथ are यूज कर रहे हैं. You are hungry. यहाँ पे हमारे पास verb नहीं है, तो हम helping verb से काम चला रहे हैं. If you are hungry, I will cook for you. ठीक है? Present simple tense. Next slide. Someone please read. If you need a ticket, I can get one for you. अगर आपको टिकट की आवश्यकता है तो मैं आपके लिए एक ला सकता हूँ. रियल फर्स्ट कंडीशनल का प्रयोग कुछ ऑफर करने या सुझाव देने में भी किया जाता है. यहाँ टिकट लाने के लिए ऑफर दिया गया. So guys, not only present simple tense, we can also use need modal verbs. If you need a ticket, okay, need की जगह want भी हम लगा सकते हैं. That depends on the situation. If you want a ticket, if you need a ticket, I can get one for you. Okay. तो यहाँ पे need हम जरूरत के लिए या ऑफर के लिए यूज कर रहे हैं. I can get one for you. So यहाँ पे हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं? हम यहाँ will नहीं यूज कर रहे हैं. We are using can instead of will. I can get one for you if you need it. Okay. Next slide. अगर आपको एक किताब चाहिए तो मैं आपके लिए ला सकता हूँ. If you need a book, I can get one for you. If you need it, if you are need, I am get one for you. Choose the right option.
Gautam, please answer. First one. If you need a book, I can get one for you. Very simple. The first is the right option, guys. If you need a book, I can get one for you. मैं तुम्हारे लिए एक किताब ला सकता हूँ. If you need, of course. So if you needed, incorrect. ये past हो गया. हम past नहीं use कर रहे, present ही use करेंगे, first form ही use करेंगे. If you are need, no is MR ING के साथ use होता है. और fourth option में I am के साथ get है, incorrect. Next slide. Someone please read. If you don't behave well, if you don't behave well, you will regret it. अगर आपने अच्छा व्यवहार नहीं बरता तो आप पछताएंगे. धमकी या चेतावनी देने के लिए भी रियल या फर्स्ट कंडीशनल का प्रयोग किया जाता है. संरचना if प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस will या want. Yes. So guys, here we are learning about other ways to use first conditional. So यहाँ पे हम use कर रहे हैं if you don't behave well, so negative. So guys, obviously present simple में हमारे पास जो negative term होती है वो do not होती है. तो यहाँ पे भी हम वही use कर रहे हैं. If you don't behave well, you will regret it. Okay. So यहाँ पे हम if use कर रहे हैं plus subject plus simple present plus subject will or won't. Okay. So do not हम negative के लिए use करेंगे. verb की first form positive के लिए. Tarub, you are raising your hand. The difference between get and bring in the previous slide, like it was written, I'll get one for you. I can bring one for you. Can we say? बिल्कुल हो सकता है. Bring or get both are same in this sense. So what is the difference, ma'am, between them? Between what, Tarun? Bring and get. मैंने भी बोला कि in this sense both are correct. For example, if I ask you get me a chair or bring me a chair, both have the same meanings. So आप बोलोगे yes ma'am, I will bring a chair for you or I will get a chair for you. ठीक है, bring भी लाना हो गया, get भी लाना हो गया. Okay, ma'am. Perfect. Next slide. अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो आपको दंडित किया जाएगा. Choose the right option. If you don't follow the rules, you will be punished. You could be punished. You will be punished. Karthik, please answer. Yes, ma'am. If you don't follow the rules, you will be punished. Yes, if you don't follow the rules, you will be punished. So guys, यहाँ पे हम negative use कर रहे हैं. Don't, verb की first form. You will be punished. Now, what is you will be punished? By will के साथ be और be के साथ verb की third form. It is passive sentence, I think. It's a passive sentence. So अगर ये right अगर active होता तो यहाँ पे होता you will get the punishment, right? यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? You will be punished. This is passive sentence. Okay.
Next slide. Someone please read. If you are studying for the test, it'll come back later. अगर आप टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मैं बाद में वापस आ जाऊंगा. if से शुरू होने वाले वाक्यांश में क्रिया प्लस एंग का प्रयोग भी किया जा सकता है. Yes. So if you are studying for the test, now guys यहाँ पे आप देखिए हम if के साथ you के साथ are के साथ ing यूज कर रहे हैं, not the first form of verb but present continuous. I will come back later. अगर तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो तो मैं बाद में वापस आ जाऊंगा. ठीक है. So guys if से शुरू होने वाले वाक्यांशों में क्रिया ing का प्रयोग भी किया जा सकता है, which means not only present simple tense, we can also use present continuous tense अगर आपके सामने कुछ काम हो रहा है. ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के घर गए हैं, आपके फ्रेंड के घर, और वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे ना, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा. ठीक है. तो ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन whether you want to use it in present simple or present continuous tense. Next slide. अगर आप सो रहे हैं तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा. If you sleep, I won't disturb you. If you are sleeping, I won't disturb you. If you are sleeping, I won't disturb you. Or if you are sleeping, I won't not disturb you. Krishna Reddy, please answer. Mehul. If you are sleeping, I will not disturb you. Third is the right option. If you are sleeping, अगर आप सो रहे हैं तो I won't disturb you or I will not disturb you, right? मैं आपको परेशान नहीं करूंगा. I won't disturb you. Very good. Krishna, Alpana, Anupam, Ajmol, Shivang, incorrect response. फर्स्ट ऑप्शन में गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमारी हिंदी में सो रहे हैं. तो सेकंड ऑप्शन में वोंट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए. और फोर्थ ऑप्शन में यू आर स्लीपिंग के साथ आई वोंट के साथ नॉट भी है, विच इज इनकरेक्ट, राइट. आई डोंट इज रॉन्ग, आई वोंट आएगा यहाँ पे. क्रिस्टियंट, जो भी नाम है आपका. नेक्स्ट स्लाइड. Please read. If I arrive before 5, I will give Neha the message. अगर मैं 5 बजे से पहले पहुंच गया तो मैं नेहा को मैसेज दे दूंगा. यदि हम किसी घटना के होने के बारे में कम निश्चित हो तो if से शुरू होने वाले वाक्यों में will का इस्तेमाल किया जा सकता है. यहाँ I के 5 बजे से पहले पहुंचने की संभावना है. If I should arrive before 5, I will give Neha the message. Should I arrive before 5? I will give Neha the message. अगर मैं 5 बजे से पहले पहुंच गया तो मैं नेहा को मैसेज दे दूंगा. यहाँ I के 5 बजे से पहले पहुंचने की संभावना कम है, इसीलिए should का इस्तेमाल किया गया है. नीरज कुमार, आपने ये इफ एल्स स्टेटमेंट भी होती है ना, ये क्या लिखा है आपने? सो गाइज यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं इफ आई अराइव बिफोर 5 आई विल गिव नेहा द मैसेज. ठीक है. इफ आई शुड अराइव बिफोर 5 आई विल गिव द नेहा द मैसेज. और शुड आई अराइव बिफोर 5, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? डिफरेंस सिर्फ आपके बोलने के तरीके में है. पहुंचा तो हमने विल यूज कर लिया, पहुंचूंगा शुड, तो पहुंच गया, तो इसमें डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है. ओके. एनी कंफ्यूजन इन दिस स्लाइड? अगर आप किसी भी
एक्शन के लिए कंफर्म्ड है कि ये काम होगा ही होगा, तो वहां आप विल लगाएंगे। अगर आप कंफर्म नहीं है वहां आप शुड यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। Actually, I'm quite surprised to see this example, ma'am. This is really like Very advanced very topic. advanced topic. Like this topic is called as inversion of conditionals. Yes, Like, inversion but of they gave only one example without discussing it in detail. right. If else statement नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नीरज और नितिन जो भी है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। प्लीज रीड। You will miss the bus if you don't run. अगर आप भागे नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी। नकारात्मक फर्स्ट कंडीशनल वाक्यों में if प्लस नॉट डोंट की जगह unless का इस्तेमाल किया जाता है। You will miss the bus unless you run. यदि आप भागे नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी। Unless इस्तेमाल करने पर नकारात्मक स्थिति पहले स्पष्ट है, इसलिए नॉट डोंट लगाने की जरूरत नहीं है। गाइस, अब हमारे पास दो टाइप के नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, या तो आप डोंट लगा सकते हैं या फिर अनलेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू विल मिस द बस इफ यू डोंट रन। अगर तुम भागोगे नहीं तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है यू विल, सेम है, बस डोंट की जगह हमने अनलेस लगाया है। यू विल मिस द बस अनलेस यू रन। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, बस डोंट और अनलेस का डिफरेंस है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप स्वयं को चोट पहुंचा देंगे। You will hurt yourself unless you are not careful, unless you are careful, unless you will careful, or unless you are careful. प्रताप। मैम यस। ये मैम नीचे वाली स्लाइड मैम कवर आ गया इसके ऊपर, स्लाइड्स के ऊपर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रिया। यस मैम, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप स्वयं को चोट पहुंचा देंगे। यू विल हर्ट योरसेल्फ अनलेस यू आर केयरफुल। प्रिया, ये सर्शा की प्लीज दिक्कत अपनी ठीक करिए। सावधानी, स्वयं, योरसेल्फ, अनलेस, ये चारों वर्ड्स आपने गलत प्रोनाउंस करे हैं। चारों में स का साउंड आएगा। आपने बोला सावधानी, स्वयं, योरसेल्फ, अनलेस, तो प्लीज इसको ठीक करिए। यस मैम। So guys, fourth is the right option. You will hurt yourself unless you are careful. Already ऊपर careful unless के साथ not है, which is incorrect. Second option में hurts है, incorrect. Third option में unless you will careful, तो incorrect है, right? Next, अगर मैं 10 बजे के बाद पहुंचा तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। If I should reach at after 10, I won't be able to meet you. If I reach, I won't be able to, or should if I reach. बहुत incorrect response है guys. Easily आपको समझ आ जाएगा। All right, Roshan. If I should reach after 10, I won't be able to meet you.
If I should reach after 10, I won't be able to meet you. The first is the right option. If I should reach. Okay. तो guys ये हम should वाला already पहले पढ़ चुके हैं previous slide में यहाँ पे. If I should arrive, ठीक है, तो ऐसे ही arrive की जगह हम यहाँ पे reach use कर रहे हैं. अगर मैं 10 बजे के बाद पहुंचा, मतलब आपके टाइम पे पहुंचने की संभावना नहीं है, इसलिए यू आर यूजिंग शुड. अगर होती तो आप विल यूज करते हैं, राइट? वोंट बी एबल टू मीट यू. एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट स्लाइड. If the weather is good tomorrow, we dash to the lake. We are go, we will going, we will go, we are gone. Tanishka, why incorrect response? Sajil, If the weather is good tomorrow, we will go to the lake. we will go to the lake. Guys, इसमें तो बहुत इजी था, ये इसमें तो आपको गड़बड़ी करनी नहीं चाहिए थी. If वाला सेंटेंस, उसके बाद हम we के साथ will यूज कर रहे हैं. We will verb की फर्स्ट फॉर्म go, right? Next, if you dash hard, you will finish this work tomorrow. Sudhir, If you work hard, you will finish this work tomorrow. yes, if you work hard, you will finish this work tomorrow. अगर तुम मेहनत करोगे तो कल तुम्हारा ये काम खत्म हो जाएगा. You will finish this work tomorrow. So guys, you के साथ verb में s नहीं आता, first option incorrect. यहाँ पे हम conditional में second और third form use वैसे ही नहीं कर रहे, which is incorrect. और ing without r नहीं आएगा. Amit, Priya, Roshan, Siva, Neeraj, Gaurav. Incorrect response. Next slide. If we go for a walk tomorrow, dash your sister to come along. Tells, tell, told, you told. Shubham. If we go for a walk tomorrow, tell your sister to come along. Exactly. Tell your sister. अगर हम कल वॉक पर जाते हैं तो अपनी बहन को बोलो साथ आने के लिए. Tell your sister to come along. Not tells, not told, not you told. Sumit, Iftikharul, Sush, Himanshu, Durre, incorrect response. So guys, आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी. We are using first form. Why you are choosing incorrect? There is one interesting point in this sentence. Like the Yes. second part of the sentence is imperative sentence. Yes, We are it's not using will in will the in the second. sentence. Exactly. Tarub, you are raising your hand. Ma'am, in the previous slide, can we say you will finish your work by tomorrow? By tomorrow, कल तक हो जाएगा ना. यहाँ पे है अगर तुम मेहनत करोगे तो you will finish this work tomorrow. तुम ये काम कल खत्म कर लोगे. By tomorrow आप कर सकते हो, कल तक भी कर सकते हो. Depends on your situation. Is there any difference, ma'am? Tomorrow और by tomorrow. By हम लगाते हैं जब हमें proper time या दिन बताना होता है. For example, you have to finish the work by 3 p.m. today. Okay? So by tomorrow कल तक. यहाँ पे वो कह रहे हैं you will finish this work tomorrow. ये काम तुम कल खत्म कर लोगे, not कल तक खत्म कर लोगे. Okay? This is the difference. You dash if you leave now. You won't not be late. You won't be later. You won't be late. You won't late. Very easy. Sumit. Yes, ma'am. Yes. You won't be late if you leave now. Okay.
तो सुमित मैंने शुरू में ही बताया था इसकी प्रोनाउंसिएशन वांट नहीं होती, वोंट होती है। want वांट Okay. नहीं, वोंट वोंट won't करके थोड़ा सा, हाँ जी। और लिव नहीं है, ये मैंने आपको शायद पहले भी इस पे टोका था, ये लीव है। आप जब वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट कर देते हो उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, आई लिव इन दिल्ली। लीव छोड़ना, leave ओके okay ma'am ओके। चलिए, सो गाइस अब यहाँ पे बहुत सिंपल है। यू वोंट बी लेट मतलब यू विल नॉट बी लेट इफ यू लीव नाउ। अभी हम इसको स्वैप भी कर सकते हैं, इफ यू लीव नाउ यू वोंट बी लेट। ठीक है, तो गाइस कंडीशनल्स में जरूरी नहीं हम इफ क्लॉज पहले रखें, हम मेन क्लॉज भी पहले रख सकते हैं, इफ क्लॉज बाद में भी रख सकते हैं। ओके, सजल, प्रिया, अमित, तनिष्का, सिद्धरामेश्वर, एनी। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑप्शन में वोंट के साथ नॉट है, इनकरेक्ट, दो बार नॉट नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन में लेटर है, इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में वोंट लेट है, बी नहीं है। नेक्स्ट, I will be very angry if you dash that again. Do, does, done, did, which is the right form of verb. This one is easy. Sumit Kumar. I will be very angry if you do that again. If you do that again. First form. Amit, Sumit, Anupam, सुश, वेंकी, उमेश। मुझे लग रहा है अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है फर्स्ट कंडीशनल में, बिकॉज यू आर गिविंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्स इन द वेरी इजी स्लाइड। डज क्यों आएगा यहाँ पे, ही शीट है। डन क्यों आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम। डिड क्यों आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम। एंड हियर कम्स द लास्ट स्लाइड। अगर आपको देर हो रही है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अरेंज द जंबल वर्ड्स। May I answer? Just wait. Now you can answer, Zahid. If you are getting late, I will drop you. Yes, if you are getting late, present continuous, I will drop you. Future simple. Easy. अगर आपको देर हो रही है तो ये हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, आई विल ड्रॉप यू मैं छोड़ दूंगा, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। So guys, that is all about the first real conditional, जिसमें हम real situation से related बात करते हैं। ठीक है, कार्तिक on top, then Gautam, Vishaka, Sajal and Taroop. Ma'am, I want to add 2 points which are not mentioned in these slides. Yes. About the first conditional. Yes. Ma'am, I want to give 2 examples. Ma'am, first example is, if you get first rank, I will buy a bike for you. Okay. If you get first rank, I will buy a bike for you. In this example, the first part is in simple present and the second part has will in it. Means, yes, future. Okay. Even though the first part is in simple present, it is talking about the future. Like if you get first rank. If you get first rank means in the future date. If he gets first rank, I will buy some bike. This part is in future. Like it is talking about the future. Right. If you get first rank, I will buy a bike. Means the first part is in future, the second part is also in future. But in the last example, which means in the last slide, if you are getting late, I will drop you. So if you are getting late, I will drop you. The first part is in present, like it is talking about the present. So for example, if
if I have a friend who is getting late, I can say to him like, if you're getting late, I'll drop to you. So the first conditional like can talk about the present or future date. This important point is not mentioned in these slides. Yes. Sarup, you are raising your hand. I have two sentences. Which one is correct? I have two sentences. Yes, ma'am. I have two sentences. Like, for example, if I ask you, will you help me? Or if I would ask you, will you help me? सरूब आपकी आवाज कट रही है. मुझे सिर्फ if I ask you सुनाई दिया है. Now, ma'am. जी. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. First sentence is, ma'am, if I ask you, will you help me? And the second one is, if I would ask you, will you help me? Which Would one is be correct, ma'am? First one is correct. If I ask you. Okay, ma'am. Okay. यहाँ Yes, पे ma'am. if I will ask you, would you आ सकता है, but if would पहले नहीं आएगा कभी भी. Okay. Okay, ma'am. Okay. खादिम हुसैन ड्रॉप की स्पेलिंग चेक करिए. It should be DROP not DROPE. Yes, Shubham, you wanted to talk. Please go ahead. I want to talk about you, but after this class, if you agree, if you give permission. After the class. Okay, so I need to end the class then. Attempted wrongly. Yes, Neeraj, that's why I always tell you guys to join on time. You guys don't join on time and then you feel कि हमारा कुछ मिस हो गया है. We are left. Repeat slides, ma'am. एक स्टूडेंट के लिए मैं पूरी स्लाइड्स रिपीट करूं, दिस इज नॉट राइट. सो प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम एंड रीड योरसेल्फ बिकॉज एक्सप्लेनेशन स्लाइड्स बहुत लंबी है. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन read them or watch the recorded session. So guys, I believe that is all for today. I'll see you in my evening session at 5. Please join on time. Today we'll do the picture description activity. Please join on time and have a great day ahead.
Very good morning, all of you. This is Veena signing in from Hello English. Hello, Tanishka. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you everyone for joining. Ruchita Verma, Prachi Patel, Naveen, Siddhana, Sushil, KRP, Sahil, Shweta, Umesh. Thank you for joining, all of you. Continue joining. Rafid, Ahmad, Rayan, Ruchika Verma, good afternoon. So many good afternoon. Prabhat Tiger, thank you so much. Good afternoon. Mohit Jain, Safana Parveen, good afternoon. I say NKT, Rajni Jain, thank you for joining. Sangeeta Rathore, thank you for joining us. Arun Balmani, Vinod Sharma, Krishna Kabade, Muhammad Imad Irfan, Nilesh Aryan Smriti, Abina Rai, Rafid Ahmed Rayan. This is my first class. Oh, great, Rafid. Please continue to join us, Rafid Rayan. हमें join करिएगा. At least 3 to 5, 4 classes I am expecting that you should join me. ठीक है? Only then you are in an actual state of, understanding that what we do in the class. So that's what I expect you to do. Okay. We have got here Saras 2000, Nilesh, Ankit, Damanjay, Prabha. This is Pratap also has joined us. Arun Valmiki, Sumit, thank you for joining. Tarla, thank you for joining. Hello, how are you doing, Arun? This is, yes, good afternoon, Pratap. Uma Shankar, Prachi, this is Pinky Sharma. Paul has joined. Pinky Begum, Prachi Patel, Pinky Begum. Yes, again, Chetan, the name has again popped up. So, Achan, Raju, thank you for joining us. Mohammad Sahib, Drishti Vanyan, 24 has joined. Altamish Mohammad, Samad Zia, Farwaz Shah, Samiksha, Swapnil. This is good afternoon from everyone. Vinod Sharma, very, very good afternoon and hello. As you know, I have started from Hello English and we are back again with another session of making you understand few things which really wants our attention. So today we'll be talking about something which is the most important thing for joining any place for work. So any one of you in my class, if you are interested in joining me, I'm sending you the pro invite. Take this pro invite and join me here. By doing so, you are able to connect with me on Zoom and we are able to chit chat and talk. If there is any issue related to your English understanding, any query that you have for English understanding or speaking, or at the same time, understanding each other a little better. Of course, you are paying extra for that. If you think you are comfortable, go ahead and join. Safina Parveen, this is your first class. Thank you so much, Safina, for joining. But I'll suggest you something. आपका बहुत शुक्रिया हमें join करने के लिए, Safina. But एक और suggest करूँगी बात, आप कम से कम 4 classes attend करिए. उसके बाद सवाल जवाब हम करेंगे. पहले classes को check करिए कि आपको classes कैसी लगती हैं, क्या है. So accordingly process क्या है यहाँ पे, आपको अपने application की बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो समझने होंगे, यूज कैसे लेना है, पहले वो सब समझ लीजिए. उसके बाद हम आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होगी तब तक. Ajmol Hussain, thank you for joining, and Nilama, thank you for joining here. Acha, I just shared with all of you the pro invite, but this pro invite will help you to go and join me with the Zoom learners there. So for that, you will be requiring my name, which is VAANA, that's the spelling that you have to type, and you have to type the code, which is 1010, and then you are good to go. Just letting you know time and again that we have got a Hello English, other classes, other teachers also. We've got n number of classes and n number of teachers teaching. Go and check their classes. आप उनकी classes में जाइए, उनको check करिए, आपको पसंद आता है उनका teaching method. Go ahead and take their name, spellings, and the code, and you can join them also for the pro. जिससे भी आप join करें, सीखने से मतलब है बस आप सीखेगा. Seka, Asif, thank you for joining. अब Jatin, thank you for joining us. I have something to say here. I have been doing this class of this session, these sessions rather, on interviews. इंटरव्यू पे बातचीत, इंटरव्यू पे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में. तो आप में से जिसको भी जो सेंटेंसेस याद आ रहे हैं जो आपने सीखे हैं, also those who are in the pro, who are on the pro members जो मेरे साथ जुड़े हैं Zoom पे, उनको भी मैं सबको कहूँगी, everybody put it on the chat whatever you have learned, because this is the new session. Today's session that we're going to talk about is based on the salary.
Of course, we'll go to top, but let's do a quick revision of whatever you have learned till now. Can you put it on the chat? Good afternoon, Prabhat Tiger. And this is Rohit Sadev, Dolly, Savita Kashyap. Good afternoon, Savita, Santosh, Aryan, Vanu. Thank you for joining us. Dolly Kumari, hello. So, आप में से किसी को भी याद है कि आपने अभी तक going for an interview में कौन-कौन से sentences को थोड़ा याद किया होगा? Hello, my name is Pratap. I am a graduate from Delhi University. I've done BCom, if you remember. I have specializations in subjects called political science. You remember these things I did with you all. If you remember, it will be very, very great. My strength and weaknesses: I am diligent, I am loyal, I am a team player, and I have scored the highest from the company in which I was working last. And when I enter the room, I remember what to wear, how to present, how to ask at the reception, how to reach to the person, and how we speak to the person. The overall 7 to 8, I think 5 classes. Now we have reached to a state where we'll be talking about. Yes, Prachi, correct answer. I am here for an interview. Absolutely correct there. She remembers the line there. My name is Abdul Ali. Okay, my name is Abdul Ali. Fine. My name is Abdul. Thank you, and Priya, thank you for joining. So all these things what we have learned about the interview. Now we are going to talk about the salary part. I know most of the people are aware of it, but that's my job. So I'm going to say that in a profession, whenever you are working in a profession, in that particular profession, you are paid for it. Paid means you're going to be paid in the currency wherever, in whichever part of the country you are. So first you have to figure out I'll just place the things for you. There are 2 things. One is the company is looking for somebody. Okay, I'll be a little loud. The company is looking for somebody. Somebody means that they want a person to work for them. So they publish in the newspapers. These days, it's everything coming on social media or through some reels or through some loan. You come to know that they require people out there. So there is one requirement which the company plays, and there is something which is called as I need a job. So I approach the company. So I go there and leave my biodata, my resume, or my CV, or I meet the person and say, look, I need a job, and these are what my strengths and weaknesses are. So these are the 2 ways I reach and connect with a person. Fine. And then you are called for an interview. So when you reach there, when you are having your first round of interview or a second round of interview, this is the last thing. Any of the person who is hiring you, the company who is hiring you, the official who is hiring you, will ask that what is your expectancy of a salary? How much do you expect in a salary? आप कितने salary को आप कितना expect करते हो? आप ये बताओ. एक होता है कि आप बताओ कितना दोगे. तो आजकल पेपर्स में भी देखेंगे प्रिंटेड आता है 25,000 की सैलरी, 50,000 की सैलरी, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि आपका वर्क क्या क्या रहेगा, काम क्या क्या रहेगा. तो वो चीजें आप जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद ही आपको वर्क बताया जाता है. थोड़ा बहुत तो बता दिया जाता है पहले से ही, काफी कुछ बता दिया जाता है. So Jatin Matankar is saying, I am Jatin. I live in Mumbai. I have completed graduation in BA currently. I am working in VRIT. And I am an hardworking and punctual. Shabash, Jatin, keep it up. Very good. So great going there. So a lot of sentences have come up from Jatin there. Krishna and Ajmol have also joined. Thank you so much. So what I'm trying to say is that when somebody calls you or you go, in both places, you need to be very clear what kind of salary are you expecting. आप सामने वाले से कितनी तनख्वाह एक्सपेक्ट करते हो. तो होता क्या है, हम ऐसा सोचते हैं कि अरे 8-10 हज़ार रुपए भी अगर मिल जाएंगे ना तो मेरा तो काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को और पढ़ाई भी करनी होती है, इतना टाइम में डिवोट नहीं कर सकता हूँ, इसमें मेरा खर्चा निकल जाएगा, अभी मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ही है. जो फैमिलीज लेके बैठे होंगे वो कहेंगे कम से कम 25,000 तो चाहिए या 50,000 चाहिए या 2 लाख रुपए चाहिए. ये सारी चीजें आपको पहले से ही सैलरी की बात आने से पहले ही थोड़ा माइंड फ्रेम में चेक करके तैयारी रखनी चाहिए. दिस इज समथिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, बिकॉज जो हायर करते हैं ना वो HR वाले हमेशा ये सोचते हैं कि जितना कम से कम खर्चा कंपनी को पैसे बचाने की बात डेफिनेटली करेंगे.
तो आपको अगर सैलरी चाहिए तो आपको थोड़ा सा मार्केट को सर्वे करना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि वहां पे लोगों को कितनी तनख्वाह मिलती है। अगर उनको बताने में दिक्कत आती है तो भी उनके जैसा काम अगर काइंड ऑफ वर्क these people are doing, even go ahead and ask from those people like what is the expectancy of the salary that I should expect from that. Like if you're doing a sales and marketing job, you can expect at least 18 to 20,000. So you get an idea with this. So when you go for a job and for an interview, you are very well prepared. Okay, I am expecting around 20-25,000. So if मैं तो इतना समझता नहीं हूँ, like I don't understand, you tell me whatever you think it is right. So the salary which would have been like 15,000 for you, he would surely cut down and bring it to you around 10 to 11,000. So he's underpaying you because you are not aware of the market. You are trying to put yourself, might be because that's a requirement for you. So you are trying to put yourself at a place where even that kind of salary is not acceptable to you, but you are doing a job because you require it to do a job. So what are your expectancy of the salary is the first question which anybody in the interviewer is going to ask. So today we are going to talk about the kind of discussion we have on the salary. So what are your salary expectations? वेतन से संबंधित आपकी क्या उम्मीद है? सामने वाला कह सकता है तुम 25,000 मांग रहे हो पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, तुम एक काम करो 4 महीने 6 महीने काम करके देखो, तुम्हारा काम देख के फिर हम इसको बढ़ा देंगे, ये भी होता है. So it's basically speaking, it's a bargaining kind of a thing. You need to actually sit down and bargain and don't feel ashamed of it. It's like उस समय जो बात हो गई ना, उस समय जो आपने बात कर ली, आपकी लाइफ लॉन्ग सैलरी या 1 year time salary या 2 months 6 months whatever time you want to stay with the company, that is this time, because after a particular time only they will analyze your, they will do an appraisal for you and then accordingly they will change the scenario of the salary. So be little I'll say be little, expect such kind of a question. इस तरह का सवाल हमेशा ही पूछा जाता है, तो आप पहले से ही तैयारी करके रखें तो बेहतर है. हाँ, एक टिप जरूर दूंगी, माहौल देख के अपनी एक्सपेक्टेंसी को रखिएगा. आप जब सैलरी, आप जब आसपास के लोगों को देखते हैं, वहाँ के काम करने के तरीकों, क्योंकि आप बाहर वेट कर रहे होंगे for your chance to come, so be a little smart enough to see, okay, this is what the way the functioning is and this is what the people are, okay, this much I should expect. नहीं, से थोड़ा ज्यादा भी मांग सकता हूँ या थोड़ा कम भी मांग सकता हूँ, पर मुझे यहाँ काम करना है तो थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा. All these things should be very very clear. Now expectation is basically मेरी उम्मीद, अभी फाइनल नहीं हुआ है बट मेरी उम्मीद. विनोद शर्मा, I am Vinod and I have done MBA from M. Arvind College, Jaipur. Nowadays I am working with MetLife. All right, Vinod Sharma, thank you so much. Let's go to the next expectation. Expectation is a vocabulary word for उम्मीद, अपेक्षा. आप क्या अपेक्षा करते हैं? अब आप इसको बिल्कुल ऐसे ले लीजिए, अगर आप किसी को खुद भी अपने काम के लिए हायर करते हैं, अपने घर में भी अगर आप किसी वर्क फोर्स को हायर करते हैं, वो हेल्पिंग हैंड्स को हायर करते हैं या अपने अंडर किसी को काम करने के लिए हायर करते हैं, तो आप अपनी पॉकेट सबसे पहले देखते हैं कि मैं कितना दे सकता हूँ. राइट? दिस इज द सेम थिंग इवन द पर्सन सिटिंग एज एन HR मैनेजर इज गोइंग. He is actually going to see what are the earnings of the of the company and how much they can invest in one person. क्योंकि आप देखिए वो जो तनख्वाह नापते हैं वो 12 महीने की सैलरी के अलावा आप जिस दिन काम नहीं करते ना उसको भी वो नापते हैं. फिर आप जिस ऑफिस में बैठते हैं वहां पे आपको AC दिया जाता है, आपको लाइट्स आपके लिए जलाई जाती है, एक आदमी रखा जाता है तो क्लीनिंग स्टाफ होगा, या फिर बस अगर प्रोवाइड करी जाती है विच इज कम्युनिकेशन, इंटरनेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए लैपटॉप दिया जाता है. ऑल दीज आर सपोज टू बी एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी. सो द HR is actually going to come to that level and then he is going to prepare himself. And the same goes with you. You should prepare your own self, all these things which I am just trying to say. Go to the people, check it out as to this is what I have, this is my qualification and this is what I am looking for. Is it right? अब अगर आप अंडरग्रेड हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 70,000 रुपए की तनख्वाह मिल जाएगी, पॉसिबल है, क्यों नहीं, बट डिपेंड करता है कि आपके पास और कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं
जो उन लोगों के लिए फायदा हो सकती है, तो उसको आपको हाईलाइट करिएगा ताकि आपको बेटर पैसे मिल सके। तो जब वो बोलते हैं ना कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, HR मैनेजर जब कहेगा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सैलरी, व्हाट इज इट दैट यू एक्सपेक्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट सैलरी एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन जो हाईएस्ट बिडर होता है ना, द पर्सन इज एक्चुअली द पर्सन हु इज गोइंग टू फाइनलाइज, ज्यादातर वही पूछते हैं, वो आपकी वही सैलरी पे हाथ के हाथ मेंशन कर देते हैं कि हमारी इतनी बात हुई है। आई एक्सपेक्ट, नाउ दैट्स एन आंसर। मैम दो नंबर पेज दिखाइए ना एक बार। I have explained this part. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Word expect, and from that this word has come up, expectation. So then you are going to give an answer by saying मैं आपसे expect करता हूँ, I expect, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कम से कम 10,000 रुपए तो दोगे काम करने के लिए, this much what I expect from you. So in a very cordial, respectful manner with less of words, you should tell them that sir, this much I expect from you. अब आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जब आप ऐसे एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो अगर उसको आप में इंटरेस्ट नजर आएगा तो वो शायद अपनी लीप से ऊपर पैसे देने की के लिए राजी हो जाए, पॉसिबल है। इफ ही रियली लाइक्स यू, ही वुड लाइक टू टेक अ jump and say no, the person is good, we can manage it, so let's try and take him in. But if he doesn't like you, he'll be like, okay, he's expecting from me 25,000, but let's decide to come to 21, and you say ठीक है सर 25 नहीं तो 21 दे दीजिए, कंपनी को 3,000 का फायदा करा, and he is actually saving his own butt by giving a profit to the company, because that's what his work is. तो बहुत important question है, बार बार बोलूंगी मैं आपको पूरे सेशन में, बिना सर्वे करे इंटरव्यू की सेकंड राउंड में मत जाना। मतलब पहले राउंड में तो वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी अंग्रेजी देखते हैं, आपकी बोलचाल देखते हैं, आप कैसे उठते बैठते हैं, आप क्या कंपनी पे बैठने लायक हैं, हमारा जो और बड़ी ऑफिस है, इन सब चीजों को देखा जाता है। और सेकंड मीटिंग में ज्यादातर, कई बार फर्स्ट मीटिंग में ही फाइनल हो जाता है, तो आप जब ऐसी आगे बढ़ती हुई बातों को देखें तो उसी समय दिमाग लगा लीजिएगा कि आप सैलरी आपको कितनी लेनी है। So be very sure for this. Okay, let's go to the next, and the whole session is about your exercises. Come forward. Semsa Zen, I think, is that the right word? Is that, I'm so sorry, I just refreshed it, so all the messages are gone. Priya Singh, Vinoda Pradam, relaxing music, Rajiv Kumar. Ajmol Hussain, please come forward and get ready to give the answer. Krishna, Sumit, Neha, Samiksha, and Shivani. Ajmol Hussain, can you? Yeah. Yes, ma'am. I can hear. Good afternoon, ma'am. The answer is I accept rupees 25,000. Okay, if I have to use, thank you so much, the answer is correct. But if I have to use the helping verb am, how can I frame the sentence here? Ajmol, you are an old student, so I can ask you this. If I have to use the helping verb am, this is another way of saying it. So what would be the sentence? Yeah, ma'am. I am accepting rupees 25,000. I am expecting, right? Correct. So again, frame the sentence. I am expecting rupees 25,000. That's what you said? Yes, ma'am. Absolutely correct. So this is also right. We can place this also, and I expect is also both ways. Now, it depends as to you're talking to a person. So are you comfortable, or are you a little jittery about it that भैया बोलूं नहीं बोलूं, कैसे बात रखूं, थोड़ा सा डर लग रहा है घर अंदर, तो थोड़े से शब्दों को और मिलाना शुरू कर दीजिए। I am expecting around 25,000. So वो थोड़ा सा मरमर करना, पॉज देना आपको वक्त देता है सोचने के लिए, और एकदम बाउंस करके थोड़ा सामने मिलेगा, पैड हो क्या है भाई, पॉसिबल ना? So it depends. When you're talking to a person, it's a conversation. It depends as to how you need to throw your ideas or thoughts to the other person. Ajmol, Krishna, Sumit, Neha, Samiksha, and Shivani. All right. This is for somebody. The answer, Sumit and Tanishka and Krishna have given us the correct answer. Yes. Can I have Sumit here, please?
Yes, ma'am. I expect 10,000 rupees per month. Shabash. And right now, Ajmol has given as an answer of using am, the helping verb. What answer would then it would be like? What sentence I could have framed? I am expecting 10,000 rupees per month. Shabash. Thank you so much. Thanks a lot. You're welcome, ma'am. Kanishka, Krishna, Ajmol, Neelam, and Ruchita have given us the correct answer. Can I have Paul here, please? Yes, ma'am. बोलिए क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? एक्चुअली मैम मैं सोचा कि यहाँ पे ये 10,000 है, मतलब रुपीज ए लगा हुआ है ना, सो इसलिए मैं एक्सपेक्टिंग लगा दिया. So I expecting. अच्छा देखो अब वो क्या है, expecting कभी भी ing फॉर्म होता है ना पॉल, इसको भी याद पक्का बैठा लो अपने दिमाग में. जब भी ing लगाना होगा ना, ing कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के चलेगा ही नहीं, सेंटेंस फ्रेम ही नहीं होगा. We are expecting, I am expecting, they were expecting. अब उसको they expect, I expect and you expect. समझ रहे हो? बिना हेल्पिंग वर्ब नहीं चल सकता ing फॉर्म, कभी भी नहीं चलेगा. ये डायरेक्ट रूट कोड आ गया तुम्हारा. ठीक है बोल, आगे से ध्यान रखना बेटा, गलती नहीं हुई. ओके. चलो नेक्स्ट. माय करंट सैलरी. सो वो अब ये आपसे वो पूछते हैं, जैसे अब आपने वर्किंग एक्सपीरियंस की बात करी कि मेरे को इतने टाइम का वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैं करंटली 3 साल से मेट लाइफ में काम कर रहा हूँ. वन ऑफ आवर स्टूडेंट जस्ट नाउ पोस्टेड दिस. तो वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा तुम्हारी अभी तनख्वाह क्या है, क्योंकि वो उनके लिए मैटर करता है, और वो आपसे सैलरी स्लिप भी लेते हैं. Salary slip is something where one company is telling us to, is actually printing and telling us it's a slip there which says the exact amount which is being payable to an individual after everything has been deducted from the salary which is required. Like if you are getting a expenses kind of things that is taken out from the company's head, or they are being added for the company both ways. Like somebody gets medical, somebody gets different kinds of bonuses, and all those things are added there. So that salary slip people ask, and to be very honest, very professional and corporate people are going to ask, corporate companies are going to ask you for the salary slip, and otherwise they will just ask directly तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, क्योंकि अभी जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो वो तुमको कितना पैसा दे रहा है पूछता है. तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऑड फील मत करो. देखिए ये भी एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है सामने वाले को गिराने का. आपको एकदम झटका लगता है. ये एक ऐसा पर्सनल सवाल है जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता. If somebody asks me how much do you get paid for this 1 hour class or 5 hours class or monthly class, then I'm not ready to answer that. How much do they pay? Again, it's a very abrupt and very personal question. But जब आपको भी सामने वाले से पैसे मांगने हैं और आपको काम करना है, तो खुद को ऐसे माइंडसेट के साथ प्रिपेयर रखो. यहाँ मेरी इतनी तनख्वाह है, आप मेरे को कितना दोगे, इसीलिए तो आपके पास जम के लिए ही आ रहा हूँ कि आप मुझे बेटर तनख्वाह दो. सो कमिंग टू द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट, माय करंट इज वर्तमान. सो वहां पे प्रेजेंट मत लगा देना. माय प्रेजेंट सैलरी इज, आई एम नॉट सेइंग दैट द वर्ड इज रॉन्ग, but let's present ourselves in a manner where I don't feel little awkward, and I'm like, okay, my current salary instead of my present. No, my present address is this. वहां पे वो present word लगा, लेकिन salary के लिए तुम current ही रखना. ओके. सपना कुमारी, शमा, जया, सविता कश्यप, मैं आप सबके आंसर्स देख रही हूँ. प्रभात टाइगर, आप लिखते रहिए, मैं पढ़ भी रही हूँ उसको साथ साथ. Please go ahead and give the answer for this. मेरा वर्तमान वेतन 5,000 रुपए प्रति माह है. प्रताप, you are stable now? Connection is okay? I am expecting rupees 2,500. मैम लाइट नहीं आ रही थी, लाइट चली गई. अच्छा, okay, fine, no issues. Mango, what is this name, Mango? Do you have some other name there, Mango? Prabhat Tiger, I have 2 years experience. Santosh Kumar, all right.
Who is Mango with me? Could you please come forward, MANGO? Hello, Mango. MANGO, will you please come forward? Hello, Neha, how are you doing? Hello, ma'am. I'm good. Thank you so How's much. you, ma'am? I'm absolutely fine. MANGO, thank you. Please come forward. Okay, no more. Sumit, Pratap, Priya, please come forward. Paul, Krishna, Samiksha. Very good call there. Yes, यस come. मैम। आइए प्रिया। मेरा वर्तमान वेतन 5,000 रुपये प्रति माह है। माई करेंट सैलरी इज ₹5,000 पर मंथ। प्रिया, कौन सी स्टेट से हो तुम? आंसर करेक्ट है। विच स्टेट डू यू बिलोंग टू? कहाँ पे हो तुम? मैम आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। You are from Chhattisgarh. यस मैम। Okay. No. I'm just asking. आप अपनी जबान को थोड़ा दबा के बोलते हो? नो मैम। नहीं, I'm actually ये vocal cord को थोड़ा सा दबा के बात करते हो? नो मैम। So try and stretch it. उसको पूरा खोलो। या है ना? उसको जब पूरा Yeah. खोलोगे तो आज मैंने आपको पहली बार ही टोका इस बात के लिए कि आपके अल्फाबेट्स है ना बेटा, वो थोड़े से ऐसे आते हैं जैसे उसको पीछे से किसी ने पकड़ रखा है। वो चाहता तो है बोलना पर वो बोल नहीं पा रहा है। हिचकिचाहट थोड़ा हो। नहीं, इसीलिए हिचकिचाहट से बिल्कुल डरो नहीं। देखो प्रिया, यही वो जगह है जहाँ पे तुम सीख सकते हो बेटा, और यही वो जगह है जहाँ पे हम गलती भी बताते हैं। कोई और जगह होगी तो मैं नहीं किसी को टोकने वाली हूँ, उसका तरीका है बात करने का, मैं नहीं बोलूंगी। बट मुझे आपकी प्रोफिशिएंसी और फ्लुएंसी को बेटर करने का मन है, इसलिए मैंने आपको कहा कि शब्दों को पूरा खोल के बोल। प्रिया, आप सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या कर सकते हो? मिरर लेना, है ना? और जब अकेली हो अपने घर के अंदर या कमरे के अंदर या ऐसी कोई भी जगह जहां पे तुम मिरर के सामने अकेले बैठ के जोर से बोल सकते हो, वहां पे अल्फाबेट्स को जोर से बोलने की कोशिश करना, पूरा मुंह खोल के। A B C H D E, ये प्रैक्टिस वोकल कॉर्ड्स के लिए है ताकि वो पूरी तरह से खुल सके। अभी उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि मैं घबरा रही हूँ, मैं डर रही हूँ, तो तुम डर डर के बात करना, पूरा नहीं खोलना। डोंट डू दैट, बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, काफी कुछ आप समझने लगे हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बस अभी आपने खुद ही ने इंग्लिश पढ़ी है और आपने खुद ही ने ही यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, सो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। अब क्या चीज है, तुमने खाना बना लिया, स्वादिष्ट भी बन गया खाना, अब सिर्फ परोसना है बेटा। इट्स ओनली यू हैव टू प्लेस इट ऑन द टेबल ना। वो भी अगर हमको कई जगह सीखना पड़ता है ना, सो लेट्स ट्राई दैट आल्सो प्रिया। ओके, माय करंट सैलरी इज ₹5,000 पर मंथ। सो माय करंट सैलरी इज ₹5,000 पर मंथ। बिंदास, किसी से डरने का नहीं। पहली बार जब अपनी मम्मी से बात करी थी तो मम्मी ने थोड़ी टोका था कि तुम्हारी भाषा गलत है, उन्होंने प्यार से एक्सेप्ट किया था ना, तुम जैसे भी बोलती हो। मैं भी टीचर हूँ प्रिया, कुछ भी बोलोगे प्यार से अग्रीएबल है, पर ठीक भी करो। सो डोंट माइंड माय सेइंग। ओके, थैंक यू फॉर मोटिवेशन मैम। ओके, कम। इसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। इफ एनीबडी इंटेंड्स टू वर्क विथ वॉइस, आवाज से अगर सीखना है उसको मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? जैसे वाइब्रेशंस होती हैं जो ऊपर और नीचे या एक जैसी चलती है ना, वेव को देखते हो ना, वैसे ही हमारी आवाज के साथ में हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं। यस मैम। मॉड्यूलेशन इज एन आर्ट, ये सीखनी पड़ती है। कुछ की जन्म से मिलती है, लेकिन आपको जब अंग्रेजी सीख रहे हैं या कोई भी भाषा के लिए इसका मॉड्यूलेशन जरूर सीखिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने अकेले बैठिए और अपने प्रोनाउंसिएशन को अपने ही कानों से सुन के आपको फील हो जाएगा ये कुछ गलत बोला ना, ये ठीक नहीं था, है ना?
Yes, ma'am. कोशिश करके देखिएगा, मेरे हिसाब से मदद करेगा। आइए, Yes, ma'am. मेरा वर्तमान वेतन 8,000 रुपए है और मैं 10,000 रुपए की उम्मीद करता हूँ। तो मैंने आपसे यही कहा कि आप, वो कहता है 8 में, तो कहेगा नहीं अब 8 है तो मैं तो 9 दूंगा। नहीं साहब, मैं तो आपसे 10,000 एक्सपेक्ट करता हूँ, आप देखिए, क्योंकि अभी तो मेरी कोई तनख्वाह बढ़ जाएगी, 1 साल का काम हो गया तो 9,000 तो मेरे वैसे ही हो गए, फिर फायदा क्या हुआ। रोहित गौर is saying, ma'am, I'm from Chambal. Krishna Reddy, get ready, you will have to give the answer, but hold your horses for some time. Let everybody try. Ajmol, Neha, Pratap, Shweta, and Tanishka have given us the correct. Oh my God. Tarla and Tanisha, stay. I'll just call you. Give me a minute. हाँ, लेटर्स को नहीं बोलना बेटा, अल्फाबेट्स को बोलो। लेटर अलग चीज है, अल्फाबेट अलग चीज है, दोनों को सेपरेटली काम है। ईच लेटर इज क्लियर टू यू? नो, ईच अल्फाबेट इज क्लियर टू यू। हम अल्फाबेट्स को लेंगे क्योंकि हर चीज के लिए rather each alphabet has got its own pronunciation, so you need to hear your own self. खुद को सुनो। Yes, Krishna Reddy, come forward, please. Yes, ma'am. My current salary is rupees 8,000 and I expect rupees 10,000. Okay, try and modulate this. Try and say it in a language where you want to convince the person. अभी तो आपने सेंटेंस पढ़ दिया, अब इसको सेंटेंस मत पढ़ो। ऐसा समझो आपको मुझे ये कहना है कि मैं आपको हायर कर रही हूँ कृष्णा। Now how will you say this? Not as a sentence, like you take that, bring that feelings in you and then try and speak. Krishna, कोशिश करो। My current salary is rupees 8,000 and I expect rupees 10,000. All right, great. Because you cannot see my face, Krishna's face, I cannot see, so I am expecting that he's just going to give a little smile and say, I'm expecting around 10,000. I think that's what he's going to say. आपने देखा, thank you Krishna. All of you who are there on the screen with me, on the screen means that you did not shift and your focus is on the screen. Don't look here and there. Just see that there is a pause, comma in between. Did you pay attention to that? Now that is a writing skill. The person who has typed knew that the person has to take a little breath inside. भैया अपनी तनख्वाह तो बता दी, अब एक्सपेक्ट करनी है, कैसे बोलूं मैं सामने वाले को। एक थोड़ा सा मन में आता है जब आप ऐसी बात बोलो, तो अपने आप को हिम्मत दीजिए। Sir, my present salary is 8,000. My current salary is 8,000, and I am expecting 10,000. हल्का सा पॉज दो और हल्का सा स्माइल करो, काम हो जाता है। सामने वाला डेड, एक सेंटेंस में बोलोगे, कॉन्फिडेंस में बोलोगे, भाई इतनी तो मुझे चाहिए, नहीं देगा तो मैं काम नहीं कर रहा, वो कहेगा गेट खोला है बाहर जा। सो आपको थोड़ा सा झुकना चाहिए, थोड़ा सा अपने चेहरे को मुस्कुराहट लानी चाहिए, और जैसा मैंने कहा था ना, मॉड्यूलेशन करना, उतार चढ़ाव अपनी भाषा, अपनी टोन में लेके आना बहुत जरूरी हो जाए। ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। देखिए, आपने पूरी तैयारी करी, आपने सब तरह से जैसा जैसा सिखाया गया वैसे आप पहुंच गए, फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो गई, सेकंड स्टेज क्रॉस हो गई, आपको जॉब चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ आके आप बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए लास्ट मोमेंट पे अगर हल्की सी स्माइल से काम चलता है तो चला लेना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स एन egoistic fight between two people. He will try to pull you down and say, नहीं भैया मैं 10,000 से नीचे नहीं आने वाला, पर मैं अपनी नाक भी नहीं दिखाऊं। सो थोड़ा सा इस जगह उलझना नहीं है ना। चलो, सो मेरा वर्तमान वेतन 8,000 रुपए है और मैं 20% बढ़ोतरी की उम्मीद करता हूँ। But this is another way of saying it. And actually ना, this percentage of voicing out for the percentage, मतलब अपनी परसेंटेज के थ्रू बताने से भी हमारी इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से शो होती है। सो कृष्णा, प्रताप, अजमोल, तनिष्का, तनीशा एंड नीरज। सो कैन आई हैव तनीशा हियर प्लीज वंस? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, Tanisha. Wait, Tanisha, wait. Let everybody try. थोड़ी देर रुको। Who is very beautiful? Lucky Sinha, okay, Jatin, Sapna Kumari, great. आ जाओ तनीशा प्लीज का।
Yes, ma'am. My current salary is rupees 8,000 and I expect a high of 20%. So which expect or accept you are saying? Ma'am, expect. Expect means Exactly. हाँ, yes, बोलो तनिषा. yes, ma'am. Expect means मुझे उम्मीद है. Accept तो मैं चाहता हूँ. Accept ये मैंने accept किया. Accept is different and could you please tell us clearly? Same तनिषा, what you said accept मतलब कि मैं तुम्हारी friend request को मैंने accept कर लिया, मान लिया, और expect करना है उम्मीद करना. मैं तो तनिषा से उम्मीद कर रही थी कि इस बार उसको 108 points आ जाएंगे, उम्मीद कर रही थी. Yes. और तनिषा ने मेरी friend request accept कर ली. So these are the difference. But आप इसका pronunciation भी उतना ही clear रखो. जब आप अपनी modulation पे काम करोगे ना, तो X और A खुद ही डिफरेंस देख रहे हो, दोनों अलग अलग है ना. E और X का में लाउडर कौन सा आ जाता है? E और X को एक साथ इकट्ठा करके बोलोगे तो X हो गया, और A और C को S. Aspect. It's aspect and accept. Yes, so that clarity will come only when you practice with alphabets. Yes. फिर उसके बाद में phonetic sounds है, उसको कभी कोशिश करो CH, SH, ऐसे connections और combinations को join करके सीखो कि कैसे बोला जा सकता है. Try and come up with this session also. I'll make one session for this also. Yes, ma'am, definitely. Be helpful for all of you. चलो आगे बढ़ते हैं. मैडम पॉल जरा आएंगी मेरे पास. यस मैम. क्या हुआ? एक्चुअली मैम यहाँ पे मेरा भी गलती है. आई एक्सपेक्ट इसमें थोड़ा ये हो गया मेरा. आपने accept and accept पे थोड़ी दिक्कत हो गई. Okay. हाँ, yes. Know the difference? Now you know the difference. इसलिए जब स्पेलिंग्स की जब हम बात कर रहे थे ना, तो ये केवल सेंटेंसेस नहीं है. इसमें देखो वोकैबुलरी आई हुई है, वर्तमान, करंट. इसीलिए मैंने प्रेजेंट भी बार बार बोला था. मैं प्रेजेंट को मत काम में लो, करंट लेना वर्ड का. तो उसकी स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी. सैलरी, राइट? एट द सेम टाइम दिस स्लाइड, नाउ दिस इज नॉट ओनली पॉल, और भी बहुत बच्चे जैसे रोहित लिख रहे हैं, मेरे से भी रॉन्ग हुआ, सविता से भी रॉन्ग हुआ, चाहे इस सेशन में हुआ, किसी भी स्लाइड में हुआ. बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो ना. एक्सपेक्ट में उम्मीद, तो एक्सपेक्ट अपन ने सीखा था ना, EXPECT. ACCEPT कहाँ सीखा? और मैंने याद हो पॉल कहा था एक्सपेक्टेशन कहाँ से आया? एक्सपेक्ट से. एक्सपेक्ट से. देखो बेटा, पॉल एक चश्मा पहनता है, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में. चश्मे को स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ना. कोई एक्सपेक्ट ऐसे याद रख लो कि तो शायद पॉसिबल है कि आपको गलती नहीं हो. एक्सपेक्ट. ओके, चलो आगे आ जाओ. नेक्स्ट. Karla Rajesh, are you there with me? Savita Kashyap. Yeah, ma'am. Please come. Yeah, ma'am. Savita Kashyap. Oh, sorry. Karla Rajesh, please come. First one, no, sorry, ma'am. Second one is right answer, ma'am. Absolutely. Tarla, give me the correct answer. Read it out. Second one is. लेकिन मेरा भी भूल हो गया. आप हो या नहीं हो हमारे साथ? My current salary is rupees 16,000 and I expect a hike of 20%. What do you mean by hike, Tarla? Hike मतलब 20% तक मुझे बढ़ावा चाहिए ऐसा. Hike मतलब उतना. Perfect. Absolutely perfect. Krishna, you have to say something. Aja. Increase, ma'am. Increase. That's an English word he said. बढ़ा हुआ. वो दोनों ने एक ही बात बोली, बस थोड़ी language अलग थी. But that's okay because we have all kinds of people. Ma'am, here I have a doubt, ma'am, in this sentence. Krishna, please say. Why first one is wrong, ma'am? Okay, my current salary is rupees 6,000 and I am expecting a hike of 20%. Article A गायब है वहां से. I am, देखो इसको ऐसे समझो कृष्णा. My current salary is rupees 6,000 is a simple separate sentence joined with a conjunction. The second sentence then, I am expecting 20%.
आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाइक, आर्टिकल मिसिंग हो गया यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया. ओके, सो आई वांट सुमित, प्रताप एंड पॉल एंड तनीषा, ऑल 4 of you come. सब आ जाओ, एक साथ आ जाओ. पॉल आप भी आ जाओ. मैम ए लगाना भूल मैंने गए। ए छोड़ दिया था. बट मैम ए लगाना भूल गया है. यस मैम, यस. ए लगाना भूले थोड़ी हो, ए वाला ए इज मिसिंग. यस. आपने भी फर्स्ट लिया जो कृष्णा हमसे क्लैरिटी मांग रहे थे, राइट? फर्स्ट वाला लिया है ना सबने, जिससे गलती हुई No, है. ma'am. I have taken fourth No, one, ma'am. but I have taken 4. अच्छा, मैं भी. but I want to know, ma'am, why A is necessary to in this sentence? necessary in the sentence because I am talking about एक particular, मैं एक particular, I am expecting a high. यहाँ आप article को mention करके specify करना चाहते हो बात को. मैं अगर अपनी बात को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि भाई मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे एक हाइक दोगे 20% की, तभी मैं आपको ज्वाइन करता हूँ. इसीलिए यही काम होता है आर्टिकल्स का, इंडिविजुअल चीजों को बताना और पर्टिकुलर चीजों को बताना. हमने अभी तक सीखा है तनीषा कि पर्टिकुलर चीजों में हम द का इस्तेमाल करते हैं, 99% करते हैं, लेकिन 1% ए और एंड भी इस्तेमाल होते हैं. Yes, ma'am. I'm in article. एवरी पार्ट ऑफ स्पीच इज इम्पोर्टेंट. आपको भूख कितनी भी लगी हो, आप खा नहीं सकते कोई चीज, आपको प्लेस करनी पड़ेगी. Yes, ma'am. Any other question anybody has for this particular part, or can I go ahead? Yes, ma'am. Yes ma'am, you go ahead. Okay, just a second. 1 minute. प्रताप, आपने कुछ और बोला था. सॉरी प्रताप, you said something I forgot. आप क्या बोले थे? मैं बोला था आई ये लगाना भूल गया. आई सेड एक्सेप्ट हाइक. मैंने ये किया था सॉल्व. आई एक्सेप्ट हाइक. ओके, एक लॉजिक और मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ. तनीषा आस्क्ड, so I am giving a little more specific part. So if I don't use, because हमने क्या, कृष्णा, even please hear me out कृष्णा, for your question is just clicked in my mind that this part is also there. कि जब आप लिख रहे हैं ना I expect hike of 20%, ये I am expecting a hike of, हमने क्यों उसको गलत माना? क्योंकि जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, when you are talking about this particular thing, this is a simple present tense kind of a answer which is expected. That means which says here, आप जैसे हिंदी में अगर हम समझे बात को, I expect a hike, तो ये कंटिन्यूएशन में जाने की बजाय इसको सिंपल प्रेजेंट पे रखिए. Are you getting my point, तनीषा? चलिए मान लिया हमने ग्रामेटिकली भी आर्टिकल नहीं काम में लिया, वो भी ठीक है, चलो मैंने उसको भी हटा दिया और ग्रामेटिकली मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आर्टिकल नहीं लगाया वहां पे. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ तो मुझे यहाँ पे नॉर्मली जो बातें होती है ना, उसको हम हमेशा ऐसी जो बातें करते हैं ना, हम तनख्वाह की, इस तरह की जो बातें होती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. That's why I have chosen fourth one. Okay, I expect hike, so that is the reason you chose the fourth one. Okay, so here comes the answer, the reason that why fourth one is not accepted to us, क्योंकि वहां पे फिर मुझे आर्टिकल ए को लगाना पड़ेगा जब मैं फोर्थ वाला ले रही हूँ. वापस देखो, I expect a hike. I expect a hike. Okay, चलिए काफी डिस्कशन हो गया. बढ़ोतरी को हमने क्या लिखा है? मैम ये क्या लिखा है? बढ़ोतरी, बढ़ाना. अभी मैंने एक वर्ड का मीनिंग पूछा था, 2 जनों ने जवाब भी दिया था. क्या था वो? हाइक. प्रताप, oh sorry, Krishna and Tanisha, I think Krishna said increase, if you remember. बढ़ाना, towards Tanisha has also given the correct answer there. अब मैंने पिछले सेंटेंस में पूछा था. बढ़ोतरी मतलब हाइक करना, बढ़ाना, towards the graph moving ahead. So Tanisha खुद ने वैसे तो करेक्ट दे दिया, यहाँ पे रॉन्ग हो गई. तो प्रिया, प्रताप, सुमित, तरला, नेहा and नीरज. Come to the next. Can somebody tell me the meaning of appraisal? I know Krishna knows it. Krishna, come. Yes, Savita Kashyap, the answer is correct.
and Jatin and Sapna Kumari. Okay, are you aware of, anybody knows the meaning of appraisal? पहले तो बोलने की कोशिश करो इस शब्द को. Appraisal. Try and speak it. Appraisal. 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 Try करो. Yes. Ma'am, correction. Appraisal. Yes, please tell me the correction. Correction. I didn't understand. Correction means what? You're talking about appraisal meaning correction. Krishna, Yes, ma'am. you are telling me the meaning of appraisal is correction, right? Yes, ma'am. I think Okay, it's just a hit and trial that you're doing. Yes, Tanisha? Ma'am, I think हिंदी में पढ़ के जवाब वो दोगे तो मैं नहीं लेने वाली हूँ. आप क्या समझ पा रहे हो वो बताओ. I understand that by experience and the way of knowledge of person. No, Tanisha. And let's understand the meaning of appraisal here. All of you, please understand. Ma'am, value of experience. yes, valuation. Value. Ma'am, Yes, performance. yes. 1 minute. Valuation. Krishna? Valuation, ma'am. Valuation. Yes, you can take that as a synonym there. Absolutely, Krishna. We need to evaluate you. Valuation word काम में लिया है. अब इसको appraisal को हम कहते हैं evaluate करना. सबकी सब attention मेरी तरफ करो. अगर मैं हेलो इंग्लिश के अंदर साल भर से काम कर रही हूँ, तो सबसे पहले हेलो इंग्लिश क्या देखेगा? बच्चों को समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है. लॉजिक, एज ए टीचर आप काम कर रहे हो, आपका काम क्या है? स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए. आप पंक्चुअल हो कि नहीं क्लास के अंदर, आपको जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उस टाइम फ्रेम में आप काम करते हो कि नहीं करते हो. इसके बाद सबसे जरूरी चीज, प्रोडक्टिविटी आपकी कैसी है? क्या आपके नाम से स्टूडेंट्स आते हैं? So these 4 factors will decide that am I an asset to the company or I am just a filler for the company. मतलब बस कहने को लिए कोई चाहिए इसलिए मैं कंपनी में उतना ही काम करके दे पा रही हूँ. ये सारी चीजों का मूल्यांकन करना, आंकना कहते हैं अप्रेजल. कोई सेल्समैन है, सपोज करिए आपने सेल्समैन का काम किया है. सेल्समैन का काम क्या है? उसको एक टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को उसको अचीव करना पड़ता है. 12 महीने होते हैं. 1 साल बाद नॉर्मली अप्रेजल्स 1 साल बाद आते हैं. 1 साल के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर 1 year, if the target for a salesman was given in every quarter, हर 3 महीने में उसको दिया जाता था टारगेट. लेकिन 4 क्वार्टर्स होते हैं. देखिए साल में 4 क्वार्टर्स आएंगे. क्वार्टर क्या होता है? 3 महीने एक साल. जैसे मार्च, अप्रैल, मई, ये एक क्वार्टर हो गया. जून, जुलाई, अगस्त, ये दूसरा क्वार्टर हो गया. ऐसे 4 क्वार्टर्स के अंदर उसने 3 बार तो अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उसने कमाई करके दे दी, सेल्स करके दे दी. लेकिन चौथे क्वार्टर के अंदर वो 50% पे ही रुक गया. मतलब सेल्स जो थी वो सिर्फ 50% तक ही उसकी हो पाई. ओके. और जो उसकी रिकवरी थी रादर से, जो मॉनेटरी फंडिंग, जो पैसा आ रहा था, मतलब आपने चीज को बेचा तो सही, लेकिन हमारे पास पूरे के पूरे पैसे आए कि नहीं, या कुछ पैसे अभी पार्टी को देने बाकी हैं. मॉनेटरी एक्सपेंसेस और नॉट एक्सपेंसेस, मॉनेटरी इनकम जो हमारे पास आई है वो भी हम देखेंगे. उसके अलावा लॉयल्टी, कमिटमेंट, टाइमिंग्स, ये सब कुछ को एनालाइज करता है एचआर डिपार्टमेंट. ये पूरी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है. वो आपकी प्रोफाइल को, जो आपने जिस दिन ज्वाइन किया, आपको जो काम दिया गया, उन सब का अप्रेजल बना के दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी की हाइक या फिर इसको हम कह सकते हैं अ लिटिल हायर पोजीशन भी आपको दी जाती है. Everything that you do, now that is a tip from my side because I've worked in corporate world also and I'm working, so I know that आप जब भी कोई काम ऐसा करते हो जो कि
लोगों को पता चलना चाहिए, नोन होना चाहिए, हर चीज को रिटर्न में रखो so that you can demand. Suppose आपका HR मैनेजर के साथ कोई पंगा है, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, suppose there is some kind of discomfort between you and the HR department. So even if you have done a good job, even you should get a 25% of hike in a senior manager post, but he doesn't want, he can stop you, he has that right, because he has everything under his control, and you are like, this is not done, I have given my best, मैंने अपना सब कुछ अच्छा करके दे दिया, आप पैसे तो आप बढ़ाओ मेरे। ऐसे में आपके लिए हेल्प कौन करेगा? आपका काम। सबके कच्चे चिट्ठे अपने पास रखो, जो जो काम आपने किया है। And then even if you are scared that I might lose a job, you have the right to go and speak to the senior authorities and say, boss, इतना इतना काम किया था मैंने और मुझे आप 5% दे रहे हो, आप क्या चाहते हो? मतलब what do you expect out of me? Never come to the last line ऐसे कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, ऐसा कभी मत बोलना। वो ऑप्शन हमेशा खुद के पास रखो, but please go ahead and be very alert, I'm telling you, because when you go out in the world to earn money professionally, you find big fishes catching the small fishes there. And the big fishes have a very big mouth and they can swallow you. छोटी मछलियां हमेशा बड़ी मछलियां खा जाती हैं। जब आप काम करें ना, तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ईमेल्स लोग बना के रखिए, फोटोकॉपीज तैयार करके रखिएगा, किसी की कोई रिकॉर्डिंग्स आपके पास मिल जाए, उन रिकॉर्डिंग्स को तैयार रखिएगा। यू आर नॉट मिसयूजिंग इट, आई एम नॉट गिविंग यू a thought of misusing it, but you never know that सामने वाला लास्ट में क्या देता है। एक बार आपका अप्रेजल से आपको पता चल जाता है कि कंपनी कैसा देती है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट टाटास, दे आर द बेस्ट। यू डू एंड यू गेट पेड, यू आर डन दिस, गेट पेड, नथिंग, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑफ इट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सी द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली। आई होप इट इज क्लियर टू यू द अप्रेजल पार्ट। कृष्णा, यू रेज्ड हैंड, प्लीज कम एंड आस्क, क्या पूछना चाहते हैं? नो मैम। ओके, I hope this word is very clear to everyone. मूल्यांकन, okay, प्रदर्शन के आधार पर वेतन में वृद्धि का निर्णय, accordingly moves ahead। आ जाइए। पिछले अप्रेजल में मुझे 20% की बढ़ोतरी मिली थी, so now you are trying I said increase। Yes, Zahra Zaidi, correct answer there। Bonus in salaries while we work good for the company। No, Neeraj, that is not promotion। Yes, appraisal is मूल्यांकन। Prabhat Tiger, I hope I have made it very clear to you this word। Neha, please come and read the sentence। If you can read Hindi, it will be very kind of you। Come। पिछले अप्रैल में मुझे 20% की बढ़ोतरी मिली। I received a hike of 20% in the last appraisal। So I received a hike of 20% in the last appraisal। So this is a kind of a communication you are trying to do with somebody, especially the colleagues do ask। आप एक ही जगह जब आप काम कर रहे होते हो तो लोगों एज ए ह्यूमंस हमारी आदत होती है, फिर तेरे को कितना मिला, तेरे को कितना मिला, फिर हम कंपेयर करेंगे, फिर खुद चिड़चिड़े हो जाएंगे, खुद को अच्छा मिला होगा तो भी लगेगा अरे यार देखो उसको इतना मिल गया क्या। सो ये सेंटेंसेस वहां काम में आते हैं, और ये सेंटेंस वहां भी काम आते हैं जब आपके अप्रेजल पे अगर आपको कोई कमी नजर आए। So last year in 2019, I got a 20% hike, but in the year 2021, you are giving me just 5% hike in my appraisal. So such sentences in English are helpful for you. Okay, this is the last slide that I am showing it. Tanishka, I didn't understand why you went wrong on the last slide there. Was it in a hurry? Performance related, yes, absolutely, Prabha। वो अब आप कुछ भी देखते रहो, typically in an interview, yes, simple past, yes, absolutely, Prabhat, Priya, Neha, Tanisha, Tarla, Chandan and Ajmoon। Tarla, I have been screaming on your name, please come forward and read this। Tarla, Rajesh, what is wrong with your, I don't understand। Yeah, ma'am। Come, but beta, I called you so many times। Come, read it out। Yeah, ma'am, I was busy। I received a hike of 10% in the last appraisal। Okay, thank you so much, and I'm so sorry I bothered you
So I received a hike of 10% in the last appraisal. This is what I said. 2019 you gave me 20% of hike, and 2021 you are giving me just 5% of hike there. Why so? So there is a comparison which is required, that you need to, and it's not just that you are looking for a monetary hike there. Might be there is something which is missing from my side, and the company has seen it and I am not able to see. आप कह रहे हो कि भाई पिछली बार तो लास्ट पास्ट है, याद है ना लास्ट वर्ड हमने पास्ट के लिए सीखा था सिंपल पास्ट में, तो लास्ट में तो आप हमें 20% दिया था और अभी आप सिर्फ 5% दे रहे हो। तो जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे की बात होती, कई बार हम हमारी परफॉर्मेंस के लिए भी समझना चाहते हैं कि भाई मैंने क्या डिटेरियोरेशन करा, यू वांट मी टू वर्क, बिकॉज़ दैट इज एग्जैक्टली द वे अ पर्सन ग्रोज। I till date ask everybody that are you able to understand? Is it okay? Am I doing fine? Is my pitch okay? And if you want me to be little loud, क्या मतलब है ये सब? आप सामने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो कि अच्छा कोई कमी तो नहीं है, तुमको ठीक तो लग रहा है कि चला गो अहेड। So this is exactly what is required when you are working with people around. ये थोड़ा सा economically, professionally जो बात हम करते हैं उसमें ये sentence बहुत काम आता है कि I received simple past 10% time. Okay, this is last. Let me see आप लोग कहाँ पे क्या कैसे कहा. How does my leaderboard come up with? Let me check it out. Okay. So I didn't participate, so I didn't get any points there. So, but I have got Siddhi Rameshwar with 548 points. पता नहीं कहाँ से आते हैं. Prabhat, yes, I appreciate you. I saw you in each slide participating. So 73 points there. Very good. Prabhat Krishna with 68. Very good. Bravo. Very proud of you. Priya with 65 points. Shabash. And Sumit with 64 points. Savita Kashyap is typing that she has got 45 points. What about my pro members? Was it difficult this time or it was very easy? You were able to get everything. देखिए ये पूरा सीन चला है इंटरव्यू का आपके सामने, और अगर आपने कहीं पे इसको नोट डाउन किया होगा, if you have written it down somewhere, it will आपके लिए एकदम तैयार है. You just read it, learn it, and best wishes for my side for your interview. All right. So tomorrow is Wednesday. We'll meet tomorrow. Tanisha, you have to say something. Anybody? Chale. Allow me to go. Ma'am, 1 minute, ma'am. Ma'am, accept and ma'am, Expect. Accept and expect. Accept. Accept. हाँ. Okay. पहले So शब्द आएगा. पे गौर दो. Okay, ma'am. Accept and expect. Accept. हाँ. Expect and accept. Absolutely. Yes, केवल जो अल्फाबेट है ना तनिषा, आपको ध्यान में बार-बार नहीं करी थी ACCEX. Yes, तो ma'am. मतलब यही था, आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ अल्फाबेट पे रखो. जब अल्फाबेट A है तो X कैसे शब्द आएगा? S आएगा. Accept. Simple. Accept. Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Meet tomorrow again, Tanisha. Yes, Pratap, please tell me. मैम ये 3 शब्द एक तरह के हैं. एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, आशा करना, और एक और है मैं सब सब्जियां खाता हूँ, एक नहीं खाता. EXCEPT. Yes. Right now अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे नेक्स्ट क्लास में जाना है, बस वो आ रहा है. प्रताप, फिर मुलाकात करेंगे. Thank you so much, Pratap, for coming up with this thought. Thank you. We'll meet everyone tomorrow. Chandan Kumar, for surely I'll engage you tomorrow. I missed on you, so sorry from my side. फिर मुलाकात करते हैं. We'll meet tomorrow again, same time at 1 o'clock. Oh, I forgot to tell all of you. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, I'm available 1 to 2. And this Thursday, I'm taking an off. I'm not coming for a class. This Thursday, I'm not available. Tomorrow, I'm taking a class. And on Saturdays, I'm available at 11 to 12. Okay? I tried to attend. Sorry, ma'am. But all are filled, so I cannot come. Thank you, Bye-bye. ma'am. Sorry, I'm All of you.
Hi everyone, good afternoon. Thank you for joining back. Hi Sumit, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon. Good afternoon to everyone who's joined via the chat box as well. Sumit, how's your day going so far? Is your day going well? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it a busy day? No, ma'am, not so busy. Not so It's busy. okay. What do you do, Sumit, if I may ask? Ma'am, mobile repairing and computer hardware work. Oh, great. So do you work in a store or do you have your Yes, own? ma'am. Ma'am, I have my own shop. You have your own shop. Okay, great. So you deal with mobile repairs and laptop computer repairs. Yes, ma'am. Okay, that's interesting. So, and where do you live, Sumit? Sorry, I never asked you where are you from? Ma'am, I am from Haridwar. From Haridwar. Okay. Yes, ma'am. Nice. So, what's the weather like in Haridwar right now? How is it Ma'am, over there? ma'am, hot, not so cold. The rain is the rain was very less Okay. in this year. Oh, Very rain. less rain. Okay. Yes, ma'am. So right now also it's not raining and it's quite hot. Yes, ma'am. I see. Okay. So for how long have you had this business or this shop? Since how long? About, ma'am, about 10 years. About 10 years. That's a long time. Wonderful. Yes, ma'am. Great, great. Congratulations, Sumit. Okay, thank you, ma'am. Welcome. So tell me something. What is the reason, that you want to work on your communication? Is there any particular reason? Not